Hello, 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 hello. Guys, what's up? Hello, 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 hello. Yeah, bro, thoroughly. I can do that. I know roughly the directions of the Isles. You know every POI of POI and Miramar, but you don't know where to find a packet. Twisted Minds काफी अच्छा खेल रही है सुनने में आया. Also have to consider the fact Let's that see. I have been looking at Miramar for a good 4 to 5 years. And you don't go to the supermarket? Well, I have moved a lot. Okay. Oh, that's fair. If you've only just This is like as if if the PUBG Mobile team kept introducing new maps. Yeah, that's fair. That's fair. I've been here for about 3 years now, so. Well, that makes sense. That's once a week, maybe twice a week if I want to get a couple of treats for myself. Hello guys, मेरी आवाज आ रही है एक बार बता देना. Something like that. Hello Aizen, hello Tarun, Saleen, 4MV Ansari, Vignesh, Saleen. आ रही है आवाज आ रही है. Enough about our grocery habits. अक्षत अक्षत, what's up? क्या रही RCB जीत रही है. Hello guys, we are live यार, we are live again. As I promised कि मैं live करूँगा, so here we go. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, first match खत्म हो चुका है. This is the second match. थोड़ा late start किया है. लास्ट डे है, मैच नंबर 2 चल रहा है. फेस कैम कब करोगे? कल से. आवाज क्लियर है. ओके भाई, कितने टीम पीएमजी से जाएगी? 6 जाएगी शायद. अरे आ गए. हेलो गोट, व्हाट्स अप, क्या हालचाल? वी आर लाइव टुडे, फुल ग्राइंड ऑन. No, that's true. Power? Yeah, especially in a game where you need to have an authority on things. That is true. Power. Nice. Trying to have some authority over this fight right now because Pmgc giving them stiff competition. Easy on the door frame. Can't quite get the job done. It's up to Al-Haji. Of course he's ready to handle business though. The only knock on the inside and the rest of Pmgc gone in a blink of an eye. Yeah, Pmgc out. What is that all about? One player still up and remaining, but one. स्पेशल इनवाइट का क्या सीन है? स्पेशल इनवाइट का सीन ब्रो, सीन ही सीन है ब्रो. अभी एंजॉय करो सीन को जो आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है. मेरे को रजिस्टर करने दो. They need to solidify their position because right now it's a bit runny, it's a bit drippy, it's a bit like liquid. We don't want that. We want a solid foundation. भाई पूरे फॉर्म में आज, भाई पूरे फॉर्म पे भाई. फुल वॉच पार्टीज ब्रो, आज फुल वॉच पार्टीज देखने को मिलेगी आपको. मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. भाई आरसीबी, Get some more sharp sand in there. Let's go. पबजी की आरसीबी. I think if anyone can do it, is RCB. I am actually a big fan of RCB. I like this team. I like most of the players. I like most of the players. निगमा डेड अभी जस्ट डेड हुई है और मारा भी किसने पता है आपको? पार ने. पार यार अच्छा रोस्टर है. Why? Because they're not in the top. Nice. I think that you made a good call. They've had some very good moments. I think they deserve to be in the top 3. I would say you succeeded. Boot camp नहीं bro. Last day, yes bro. Last day. Final day. Sure. I think coming into this tournament, I think I probably would have still predicted RCB. I saw them as a team that definitely had the potential to. अभी मेरे को भी रजिस्ट करने में टाइम लगेगा. डायरेक्ट आते ही मैच स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने टीजेबी का क्या ही कमबैक था ब्रो. पीएल की बातें तो होंगी यार, चर्चा है पीएल की बनती है भाई. टीजेबी ने जो कमबैक मारा है भाई, फाड़ भाई फाड़. एफएलसी ऑन द टॉप सेंटर यार, सही है. बहुत ही गंदा जोन है वैसे. Silas is a wild card. I think he does what he wants and the team kind of has to respond to him. Always easy. But they have an interesting playstyle where Silas S2G का चिकन आना चाहिए क्या वाला मैच आना चाहिए. नावी का ओल्ड रोस्टर कहाँ है? नावी का ओल्ड रोस्टर कहाँ है? वर्चस प्रो का रोस्टर भी टॉप का है. ओके लेट्स सी. अभी तो टीएस, ट्विस्टेड माइंड्स, बीएफएनस यू सभी टॉप पे चल रही है. टॉप. बट इस पॉइंट्स टेबल में कुछ भी पॉसिबल है जो टीजीबी ने करके दिखाया है. फेल का that is the Infinix GT20 Pro that you're looking out for to count up. Future has a very nasty hit over towards Magnum. Why, how many lineup Falcons have, bro? Zeus. Falcons जीतेंगे. Okay, bro. Let's see. 61 points है, bro. Almost double difference. बहुत मुश्किल है. हर मैच CD वाला point. 2 goals and direct opposition from one another. Rita
moves up, scouting forwards, getting some information. Nades are starting to go through, so he turns his tail. हाँ, final day bro, final day. Today is the final day. As I promised कि करेंगे watch party, so I am here. The northeast side of Picardo kind of splits this lobby in two. There's this massive valley that is in the middle of this circle. At the moment, I think तो थोड़ा share कर दूँ यार इसका watch party वाला link. 77 have the compound that sits on the road, sort of in the middle of it all. They might try and weather this storm for a little while longer. I think it is S2G, in fact, who got a little bit of control on that, but share कर रहा हूँ guys 2 minutes. Positions potential to stay out of the fighting for a while. And the teams on the northwest and on the southeast are going to have to start to figure out how they can conclude these engagements and get extricated from their side of the circle if it moves to the other side. पर डेडिकेशन देख रहे हो, फुल हार्ड वर्क चल रहा है मेरा. Virtus Pro over towards the eastern edge. And Fireflux look to guard them out. Virtus Pro. A lot of teams actually rooting for this squad to bring those points margins down a bit. To allow a team like Fireflux in. No matter what happens, give them a little bit more safety in terms of the net. हमारी टीम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हाँ पूछो यार, सब कुछ पूछो. Funnily enough, and you're right, this valley that runs through the middle. FF It's an interesting one. फ्लक्स सोल के ये तो सेम रोस्टर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. वर्चस प्रो का रोस्टर पूरा ही चेंज हो चुका है. इसमें किस किस का स्क्वैश, अरे स्क्वैश 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 कौन से लाइनअप में था स्क्वैश? गाइस याद दिलाओ. स्क्वैश सुना हुआ, अच्छा प्लेयर है स्क्वैश भी. No doubt about it, this is going to be tough for a lot of our squads. It's going to cause a massive. और योगी भाई बढ़िया 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 वीपी. यार मेरी टीम को एच खेलना नहीं आता, क्या करूं? Really quickly now, you can see Heroic, you've got Brute Force, Navi, Trovo 2030, IWNRX, all of them outside the circle, and this is what I was talking about. If it shifts away from एज में क्या मिस्टेक्स हो रही है आपकी पहले? Going to have to go for a mad dash here. And I think a lot of teams are going to go for a sweep. There's going to be a traffic jam on the एज में आप क्या चोक कर रहे हो? As the road crossing. बैक गार्डिंग चोक कर रहे हो, क्या चोक कर रहे हो? Could potentially see a cross down towards S2G's compound on the road side, or 77's position over on the cliffs on the west. But at the moment, the top of this hill, where Team Spirit, where RCB, where Twisted Minds sit, I don't think that they really इनको मैं हाँ इनको का स्क्वैश भाई अच्छा प्लेयर है. इनको अरे इनको गेमिंग की तरह बे. I would 100% agree. A lot of teams going to be a case of trying to navigate your way around. टीम्स कॉल गलत आती है, पैनिक. तो वो तो यार आपको टीम कॉल आप खुद ही प्रॉब्लम बता रहे हो और सॉल्यूशन भी उसमें है. जब कॉलिंग्स मेजर रहती है यार एज पे, आपकी कॉलिंग प्रॉपर जब आप पे पुश आ रहा है या फिर एज पे आगे आपके फाइट्स हो रही है, वो एक कोऑर्डिनेशन और एक जो सिंक रहता है वो नीड टू, उसका आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. वो प्रैक्टिस से ही जाएगा. स्क्रीम्स खेलो, स्क्रीम्स पे एक प्रॉपर प्लान बनाओ एजिस पे. एरियाज क्या आप होल्ड कर रहे हो एजिस पे, एडीएस एंगल्स आपके क्या है, एक प्रॉपर अगर आपने स्प्लिट लिया है 2-2 का एज पे है ना, इफ यू आर इन प्रॉपर स्प्लिट करके बैठे हो तो क्या एडीएस है. कॉल्स दे के खेलो कि हाँ यहाँ से इस एंगल से अगर पुश होगा मेरे पे तो तू मेरे पे एडीएस रखियो, इस जगह से मत आने दियो. मतलब ये चीजें आपको बोल के ही करनी पड़ेगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. Pro still suffering. IC hops out. That's a great little pick up there onto Scarface. और क्या बताऊं आपको इसमें? Players from Fireflux remain. Gets straight back in as well. No one else nearby. Yeah, it's a very isolated. Best edge team India in India. हम खेलते हैं edge. आप gods. हाँ बाकी आप मैचेस देख सकते हो अगर आपको देखना है. Even आप gods देख लो. हमारे मैचेस देख लो, गॉड्स के मैचेस देख लो. और आप किसके देख सकते हो? टीम्स के नेम अभी सडन तो याद नहीं आ रहे. इवन यू कैन वॉच RGE किस तरीके से वो एज एग्जीक्यूट करते हैं पूरा. मतलब एज खेलना एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ भी है. अगर आप एज पे हो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी रहनी चाहिए. आपका स्काउटर जो आगे जा रहा है कितना आप इन्फॉर्मेशन किस जगह से निकाल पा रहे हो और उस जगह को कैसे आप यूटिलाइज कर पा रहे हो. ठीक है.
कोई नहीं, इस पे एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर, एक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाएंगे जहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे मोस्टली इन फ्यूचर। मुझे मान्या रोटेशन बहुत पसंद है। अरे मान्या ब्रो, फिर मान्या डिफरेंट ब्रो। मान्य जगह है, वो हर एक चीज देखता है। मतलब अगर वो लॉबी पे खेलने जा रहा है तो जो उसके अपोजिशन पे 15 टीम्स है, वो हर एक 15 टीम्स को बार बार देखता है कि वो कैसे खेलती है, व्हाट आर देयर माइंडसेट, व्हाट किस तरीके का उनका माइंडसेट रहता है सिचुएशन पे, किस तरीके से रोटेशंस पार्ट ले लो, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को, है ना। मतलब वो दिमाग से बहुत खेलता है मान्य इन चीज़ों पे। तो ये चीज़ें आपको भी करना चाहिए एज एन आईजीएल। आई विल गाइड, इवन एज एन प्लेयर आई विल गाइड। जितना देखोगे उतना सीखोगे। अपने रीजन की टीम्स को देखो, जिसके साथ आप मतलब T1 टीम्स मोस्टली हमारी रहती है, तो हम T1 टीम्स को ज़्यादा देखते हैं। आप देखो, उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उनको देखते रहोगे ना आप, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जब खेलते रहोगे साथ साथ एक साथ लॉबी में, तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो वो चीज़ें मानने का बहुत अच्छा है, अडेप्टेशन मानने की बहुत बढ़िया। और इतने टाइम से खेल ही रहा है तो समझ रहे हो। to catch the fullback, doesn't quite connect unfortunately, and Brute Force are looking to sweep through. इवन व्हेन जब हमारे ऑफिशियल मैचेस भी हो रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर वो खुद से इनिशिएशन लेता है, वो खुद से मैचेस देखता है, जाके देखेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए एज एन आईजीएल। मेरे को इवन आरू ओजी से वो भी भाई बहुत मेहनत करता है भाई आरू। बहुत बहुत आईजीएल मिल जाएंगे अभी के टाइम पे यार। सिंपल सी बात है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि आपको अपने से इनिशिएशन और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको टॉप पे रहना है। दैट्स इट। अगर आप अपने से एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप अपने से नहीं करोगे चीजें, तो चीजें थोड़ी सी रहेंगी ऊपर नीचे। जो अपने से मैं एफर्ट डाल रहे, मेहनत डाल रहे, वो आगे बढ़ ही रहे। कैसे होगी भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Also guys, if you're new to the team, new to the stream, make sure to hit the like and subscribe to the channel. A little bit more strong now, but Falcons अब मैचेस पे थोड़ा ध्यान दे, आपकी बातचीत कर ली। A nade in through the window. Is that going to find the re-knock? No, goes a little bit too far. Wild back up. Brute Force towards the north side, looking towards Heroic. How many matches left? Bro, ये दूसरा मैच चल रहा है, 6 मैचेस होते हैं। बाकी जिसने एज वाला क्वेश्चन पूछा था, बेसिक आपको मैं चीजें बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड उसके रिस्पेक्टिव में डिसीजन मेकिंग्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है एज पे विदाउट इन मतलब इन्फो जितनी रहेगी, आप उतने अच्छे तरीके से आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करना है। Twisted Minds currently as well That's on the northwest point of this glut of teams over towards the graveyard position, over towards that church, gives them a little bit of an opportunity to outlast it all. All of the other teams, they're going to have to fight through the south. बस गाइस बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब मैच को देखते हैं यार, थोड़ा सा मैचेस पे फोकस कर लेते हैं। Even if they do not have the capability to win the fight, there's a capability to earn placement points because of it. Fireflux, they're at the back of the queue. The Falcons going to try. सोल का एक स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट। स्ट्रांग पॉइंट हम खुद ही है, वीक पॉइंट भी हम खुद ही है भाई। अच्छा खेल रहे तो आप स्ट्रांग पॉइंट बोल लो, अगर अच्छा नहीं खेल रहे तो वीक पॉइंट बोल लो। हम खुद ही है यार, अभी अपना कंपटीशन खुद से ही है, अभी खुद से जीतना है। पहले जो भी चीज़ें चल रही है खुद पे वर्क करना है, खुद से जीतना है, फिर आगे कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। That's it. अरे अरे किसी का शगुन आया यार गूगल पे पता, गूगल पे शगुन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अभी हमारे को शगुन भेजा है गूगल पे। Otherwise known as RCB, on the southeast side now, going to have to push out from their location for the first time in a while. The Falcons with the perch over the top, making it so hard. Nomi caught. Effect's going to struggle to get in. Good Molotov to prevent them from getting in towards this building. And I mean, for RCB, they do need to push through here eventually. Effect looks to stand up, but it's a good side swipe angle from Pmsl. It's only a matter of time after Nomi went down before something like that did occur. Nice name, 77. We'll find at least one.
When will get India get PMGC slot? यार Trying to exchange here, and there's the shot क्या coming through क्वेश्चन from पूछ रहे हो? Rita. पता नहीं भाई, ये Limbo, तो who आप ऑफिशियल Maniac से is पूछो. flushed away. ऑफिशियल जब चाहे तब स्लॉट मिले, हमें क्या पता इस 77 बारे में having a यार. tough time. RCB have the suppression at distance onto this angle, but the question is, are they peeking it? Are they looking for these अभी भाई shots? आपके हिसाब से कितनी टीम 77 are going to struggle ग्लोबली to press this कम्पीट ridge line करने को रेडी either है? way. It's going to be नहीं भाई, difficult. अब इसके बारे में मैं जस्ट अभी बात ही कर रहा था किसी से. मैंने इवन 77, पीएल भी there's a देखा. timer on इंडियन it, but टीम्स a आर nice बेस्ट, मेरे को nade from अच्छी लगती है Shifu इंडियन once टीम्स. again. Marks all the ग्लोबल way over the टीम्स top, के explodes over on एंगल्स Rita's प्लस face. क्रॉस फायर्स काफी अच्छे है. हमारी टीम फाइट लेने में बढ़िया है. Shifu might ये मत just सोचना कि ग्लोबल की टीम से shifted हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. हमारी chances टीम in भी their बेस्ट favor. है. हमारी टीम भी That's to अच्छी get है. another nade through. I think that was maybe a little ग्लोबल bit पे आप बोल overzealous सकते हो कि from Shifu. अच्छे एंगल्स एंड क्रॉस फायर्स जो एडीएस रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं. तो जिसमें टीम्स अगर फाइट लेने जाती है तो फंस जाती है. अगर आप पीएल भी देखोगे काफ़ी अच्छे क्रॉस फायर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे. इवन टीम्स अगर रोटेशंस दे रही है, बीच में क्लैश हो गया, एकदम से टीम एंगल्स और क्रॉस फायर्स इतने अच्छे बना लेती है अपने एरिया के अराउंड. आप देखना फाइट एलजीडी का भी मैंने आज मेरा मार की फाइट में देखा था. तो ये चीज़ ग्लोबल टीम्स का थोड़ा फास्ट है, थोड़ा क्विक है, थोड़ा अच्छा है. बट हमारी टीम भाई इन टर्म्स ऑफ फाइट किसी से पीछे नहीं है. मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ. Falcon out. नो डाउट अगर हम कभी बैटल करेंगे ग्लोबल टीम के साथ तो हमको डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लंबे टाइम बाद शेयर करना वाला भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी. बट माइंड पे ही मत रखना कि ये है वो है ऐसा है वैसा है. वी आर बेस्ट टू. माइंडसेट नीड टू बी हाई. हमारा माइंडसेट हमेशा हाई रहना चाहिए. अगर हम कभी फाइट भी करें तो फुल बूस्ट अप अपनी टीम को पंप अप रखना. जो भी आप फैंस हो कर सकते हो. माइंडसेट भाई पहला चीज़ माइंडसेट का होता है लॉबी में जाने से पहले. याद रखना माइंडसेट रहेगा ना कि हाँ आप कर लोगे तो आप उस चीज़ को कर सकते हो. अगर आपके स्टार्टिंग में माइंड आ जाएगा यार ग्लोबल टीम्स आ रही है, यार ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, वैसे खेलती है, तो आप वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे. स्ट्रैटेजी एक तरफ, प्लानिंग एक तरफ, उससे पहले आती है माइंडसेट की गेम. अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट है, आप जाओगे कि मैं फाड़ दूंगा, मैं मारूंगा कोई भी लॉबी पे, फिर आती है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात. जो माइंड से हार गया वो गेम हार गया. चलो भाई बहुत सारी बातचीत तो हो गई. मीनवाइल अब किसका सीटी आने वाला है यहाँ पे? अच्छा कॉन्फिडेंस है सलीन भाई, मतलब ये नॉर्मल सी चीज है ब्रो. नो डाउट यार, यू हैव एडवांटेज. आप ग्लोबल लॉबी शेयर कर रहे हो, आप एक टीम के साथ खेल रहे हो, आपको एक्सपीरियंस रहेगा, आपको पता है न्यू जोन मेटा आप कब से खेल रहे हो. यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस. आप ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते. टाइम लगेगा बट कर लेंगे. इसमें हंसने वाली बात नहीं है. हाँ बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सही में कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि माइंड सेट हाई रख के मार देंगे और आप अंधा ही चले गए मारने के लिए, तो दिमाग लगाने वाली चीज़ भी रहती है. वो दिमाग वाला पार्ट मतलब बेसिक है. वो चीज़ याद रखना, वो जो मैंने पॉइंट बोला. Get the angles onto the rest of the lobby. At the moment, 77 with the west side. They have got a long line. They're extending the influence. S2G, they tried to transition over to the east side of the road. It did not go well. 77 विनर चिकन डिनर. ठीक है भाई, तू रहने दे कुणाल. आज जो भी तूने प्रेडिक्शंस दी है ना, वो मुझे थोड़ा सा वो लगी है भाई चीज की, वो गलत हुई है, अपोजिट हुई है. क्योंकि भाई S2G का क्या डाउनफॉल नहीं आ रहा है. एक टाइम पे क्या डोमिनेट करते थे, उनकी टीम में बहुत सीन भी हुए. रेस का मैं 1 साल से सुन रहा था सीन हो रहा है, फिर वो रुक गया था, फिर से उसका सीन हो ही गया. कोई नहीं, छोड़ो, अभी मैच देखो, एंजॉय करो. And for 77 over towards that western side, big split from them. Twisted Minds as well. Remember, this game does mean a lot to Twisted Minds. चलो ट्विस्टेड का जीजी करवाते हैं. ट्विस्टेड का जीजी क्या करवाओगे? 2 मैन ऑलरेडी है भाई वो. Like to pump their score line up some more. What a sing! Looks at the double spray and it's not meant to Nice be. one. We're now into
बैक करने का मन कर रहा है, पीछे देखूं फिर से। अच्छा था। We've had a very, very chilled out game up until this moment in time, where they were thrust Squash. into the hellish battle. खत्म। That has been going on the sidelines. He is spotted, but not down yet. Quick reposition from Swash. It's a two-way engagement at this point. I think Swash out in the open is going to have a real tough time to make this one work. He might be able to pick up a point or two, but this is अबे लॉर्ड भैया ट्विस्टेड माइंड्स में आ गए, बहुत चेंजेस हो गए बे, मतलब चेंजेस इन टर्म्स ऑफ शफलिंग ही हुए, जैसे स्क्वैश इधर आ गया, रेज उधर चले गए आरसीबी में, तो थोड़े बहुत शफल्स हुए, मतलब टीम्स में अच्छे खासे शफल्स हुए बड़ी बड़ी टीम्स में। More secure, but 77, they just got the lineups on the run out here. The amount of angles that they've got. 77H chicken dinner loading. Lord is down. Doran now in a 1v3v1 with Swash also going to ladder up into second place. Descending here. There's just nothing you can do for Doran. Yeah, it's very hard. I mean, Twisted Minds pretty happy, honestly, because they have been the arbiters of that eastern side. To get a third place here wouldn't be the worst thing in the world for them. For Elims, third place in S2G, pretty much get a free game off that compound on the northwest side. But I don't think it's going to last for long now. As nades start to go over to Lord and Coops leave Nigma Galaxy and join Twisted Mind, and Twisted Mind फाड़ रही है अभी, ऐसा क्या? NGX भी अच्छा ही खेल रही है, गया Squash. Swash trying to get some healing done, but no, it's not going to happen. S2G down, second place. They get चलो the ladder up from the 3D easy 77H second third मैच जो भी होगा वो अच्छे से देखते हैं। शेड्यूल क्या रहता है यहाँ पे मैप का? फर्स्ट शैनॉक, 2 मिरामार, 3 इरेंगल, ऐसा क्या? स्वैश है वो, स्क्वैश नहीं, स्वैश एक स्क्वैश था यार शायद, सॉरी for wrong pronunciation. Yeah, I think for 77 they didn't have an easy push either for themselves from the south side. They slowly skirted past stealthily towards the guys on Zeus, and they were able to just angle themselves out very fantastically. And again, the majority of the positions that were safe to play were over towards that eastern side, so you had to be very, very on the ball to be able to play. इतने सारे questions. To claim that space. A7 or 4MV, which is better? Both are better, bro. Remain in the end. It was 77. जब मैं Pmsl CS से देख रहा था और BM पे साथ देख रहा था, BM पे team playing like okay bro. The team's early into that graveyard high ground position. Navi as well. Having a rough time of getting out of there. Kept in the lock-in. 77 held the key. 6 eliminations, 1,340 damage. सोम भाई ये क्या क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर क्या ही दूं मैं आपको? Yeah, I mean they'll be happy with this. इसका आंसर सॉरी मेरे पास नहीं है आपके लिए। अरे 31 अक्टूबर से PMGC स्टार्ट हो रहा है और 31 अक्टूबर, दिवाली भी तो 31 अक्टूबर की है यार, अक्टूबर को दिवाली को स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ था? Rotating past my window just there. I think that, I don't know what's going on, but like 3 superbikes just making a lot of noise. यार दिवाली भी तो 31 की है यार, ऐसा मत करो PMGC वालों यार, कर दिया गया इन्होंने ऐसा। 11 points blank. They were able to get 10 eliminations. Yeah, I mean for RCB, like I said, this was a game where they knew they had to get something out of it, and although they weren't able to get a huge amount of Ashwini bhai, yes, points, we are good. They got the 10 because they were kind of on the boundary, and I do think that the potential is there for RCB. So obviously यार दिवाली important है यार, साल में एक बार त्योहार, दिवाली में घर वाले PMGC वो मारेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चप्पल आई उड़ते हुए। अच्छा भाई तुझे स्ट्रीम करनी है, चप्पल आई उड़ती हुई शू करते हुए। As we look at our match report, you can see Zadira was able to top the damage and doing actually, I think that over half of 77's damage all comes from Zadira. And would you expect anything different? This guy was absolute MVP material coming through from the league stages, and it seems like he's going to continue. इंग्लैंड की होस्ट टीम कौन सी है पता नहीं यार, वो तो होगा, किसी ना किसी को स्लॉट मिल जाएगा। Because Zadira has been consistently the best player on that squad.
pulling out some very, very fantastic moves. I mean, आयोगी इंटरनेशनल स्कीज में इंडियन टीम्स पार्ट लेती है क्या? नहीं, ग्लोबल कहाँ खेलते हैं? Really cracking all the best jokes, at least playing them on other teams so far. So I think they'll be very, very pleased that he is currently here. Okay, points table team spirit 138 to Stint Mind 137. अच्छा कंपटीशन है यार. Brute Force 131, 77, 124, Zeus 120, 129, 111, 96. Guilty Sports of David Beckham. Pushed up into the podiums, then they've been pushed back down again, but it's not going to be the end of the Guilty world for Sports them. is the host team invited. Okay. By the way, मैंने खोला हुआ है PMGC का. Till now PMGC पे कौन कौन सी teams है? Let's see. बातचीत भी कर लेते हैं. PUBG Mobile Global Championship 2024. And then 95 down to IWNRX, Okay. which is again होस्ट कंट्री मिल गया है इनवाइट यार. I think as it होस्ट sounds, कंट्री Qualifiers ग्रैंड not फाइनल्स make में it, है गिल्ड ई-स्पोर्ट्स. because डेविड बेकम की IWNRX टीम है. and Virtus Pro are in 9th and 10th. Those are the ऑल्ट्रिगो लाइमैक्स. भाई मेरे को ये टीम, मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरे को जो टीम अच्छी लगती है, मैं आज से मतलब 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ. दिस इज गुड टीम. दिस इज गुड टीम बट इतना देखा नहीं है मतलब PMGC पे. ये बहुत तगड़ा खेलती है. वेम्पायर आई डोंट नो इस बार कैसा रहेगा. मेरे को इस बार लगता है इस बार काफी लर्निंग्स लेके आ रहे होंगे, सो ये भी अच्छा खेलती है. द सेवियर डाइसी है, खेल भी सकते नहीं भी खेल सकते. इस टीम के बारे में ज्यादा पता नहीं है. टीम सीक्रेट मे बी दे कैन प्ले गुड. फेस का पता नहीं. RRQ इस बार बहुत अच्छा रोस्टर खेल रहा है. बेगाट्रॉन पता नहीं भाई, शायद नहीं. वॉइन नहीं पता ज़्यादा. 4 मिरेकल वाइव्स भाई ये रोस्टर में एक अलग ही बात है. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई इनका प्लेन. भाई इनका जो सिंक और जो कोऑर्डिनेशन है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा. DRS जैंग भाई, इफ़ यू आर वाचिंग इन फ्यूचर 2 इस बार निकालो यार. #2 वाला आप लाए थे, फिर से करो कुछ बड़ी चीज़ भाई. I8 बहुत प्यारा खेलती है, हर टाइम क्वालिफाई होती है. फैल्कन्स फोर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. स्टॉलवर्ड ज़्यादा नहीं देखा है, पता नहीं है. मेजर प्राइड इज़ अ गुड टीम. होरा, मैंने इस बार ना सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा मैंने टीम के बारे में सुना है, दैट इज़ होरा स्पोर्ट्स. मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि होरा स्पोर्ट्स CSM एक ऐसी टीम है. या मेरे को रोस्टर आते तो ज़्यादा देखने का मज़ा आता. इस टीम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया है. DE ये कौन सी टीम है? इनसिलो एंड बाकी कोई टीम आराम में. TJB को आज हमने देख भाई, TTB क्वालिफाई हो गई है गाइज. बाय द वे ये सेक्शन हमारा रह गया था. TJB TT TNBA क्वालिफाई हो चुकी है. अब एक स्लॉट बचता है, दैट इज PL क्वालिफायर्स. बाकी 3 टीमें हमको मिल चुकी है. किंग ने क्वालिफाई कर लिया है. किंग क्वालिफाइड टू द PMGC. CAG, वोल्टेक्स, DRX, D+ किया. मजा आएगा इनके साथ खेलने में, मतलब देखने में. राइवल कप से बाकी स्लॉट रहेगा. रिजेक्ट का एक ही चांस बनता है, डेट इज राइवल कप. स्पेशल इनवाइट यार मोस्टली यार IHC को ही जाना चाहिए जितना लग रहा है. बाकी देखते हैं क्या सीन होता है. अब बताओ होरा के बारे में आपने क्या चर्चा. RRQ इज बेस्ट टू वॉच. यस मैंने एग्जैक्टली मैंने जिन टीम्स के बारे में इस साल मैंने सुना है, दैट इज RRQ एंड होरा. जो मैं जितने भी टीम के बारे में बात बताई, ये 2 टीमों के बारे में मैंने बहुत सुना है. इवन रिजेक्ट अभी है नहीं यहाँ पे, हो जाना चाहिए उनको क्वालिफाई. होरा इज प्रीटी गुड. माफिया निंजा इज द कोच. टीम हैव गुड गन पावर. इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन एंड हाउ दे प्रिपेयर. ओके. TC सुकी नीडेड इन GC. ही हैव लाइक है उसके पास चांस. बाकी देखते हैं. आएगा भाई अपनी टीम को वापस से डोमिनेशन अब देखने को मिलेगा. जल्दी मिलेगा भाई, टेंशन ना लो. स्पेशल इनवाइट हमारा होता तो, अरे छोड़ो अभी वो ऑफिशियल को पता है, बट मोस्टली IHC को जाना चाहिए. एंड उनका बनता भी है जाने का, क्योंकि दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस को बनता है भाई. नो फियर IGL. नो फियर के बारे में मैंने बहुत सुना. मैंने नो फियर के ऊपर शायद वीडियो भी बनाई है. नो फियर इज अ गुड प्लेयर ब्रो, फ्रॉम नेपाल. ही इज गुड प्लेयर. स्काई होरा सर्च करो ब्रो. स्काई होरा को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, देखता रहता हूँ. RRQ डार्क होर्स रहेंगे. चलना तो चांद तक वरना शाम तक. ऐसी बहुत टीम है, चढ़ना तो चांद तक वरना, जिनको मैंने बोला कि पता नहीं मुझे, उनका है सीन ऐसा. एक भाई अपनी टीम को वापस करेंगे ब्रो. 4MV विल बी चैंपियन, दैट्स माय प्रेडिक्शन. लास्ट टाइम कोई ना, इस बार कर लेंगे. वॉज गिव द बेस्ट इंटरफेयर यू कुड गेट. यस ही इज गुड ब्रो. बाकी देखना भी आके आपको दिखेंगे रिजल्ट थोड़े टाइम पे. थोड़ा टाइम दो, टाइम दिया करो.
TX also deserve, बट अगर रोड मैप रहता प्रॉपर तो मे बी क्या पता वो होता। अब रोड मैप नहीं है एक प्रॉपर, वही तो बात है ना, रोड मैप के ऊपर ही सारी चीज आ जाती है। TGB में SSS 676 हुआ लॉन्गजाई है। यस JD प्लीज क्वालिफाई, लेट्स सी। अभी तो यार बहुत कंपटीशन होगा, PMGC क्वालिफायर्स तो PL रीजन पे बहुत तगड़ा जाने वाला है। बूम नहीं हुए का क्वालिफाई, वो भी बढ़िया खेलते हैं। TJB यस, DRS नाम ही काफी है। यस आई थिंक इंडियन टीम्स को सिचुएशन फिट टू स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी हम किसी से कम ब्रो कम नहीं मानना अपने आप को। वी आर द बेस्ट, नो डाउट। नहीं खेला है चीजें नहीं है, बस मेरा वही चीज आपको बताने का मतलब था कि माइंडसेट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। हमने, रुको इसको बजने दो, ये होने दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। नो फियर आईजीएल स्काई फ्रैगर मलिक सब, और मलिक भाई भी है क्या इसमें? ओके मिस्टर बोरो फ्रैगर, माफिया निंजा कोच 5th प्लेयर, CR7 और स्ट्रीमर ओनर। ओके मलिक भाई भी है। मलिक तो यार चैंपियन है ब्रो, मलिक तो चैंपियन है ब्रो। वो जिस भी लाइनअप में जाता है वो चैंपियन बन जाती है। HV में भी था मलिक, उससे पहले भी किसी लाइनअप में था, वो भी चैंपियन बनी थी। HV के बाद रूल्स वाली लाइनअप में भी मलिक गया था। ये वही मलिक है ना, आयुष आचार्य? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आएगी ब्रो, स्टिक टू रियलिटी। हम बहुत पीछे, इंटरनेशनल पीछे होना और यही सोचते रहना कि हम पीछे हैं, दोनों में फर्क है ब्रो। एक माइंडसेट, जब तक हम आगे जाने का नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे को वही चीज़ आपको समझाने का मतलब है। ऐसा मैं भी बोलता था कि हम पीछे पीछे पीछे, बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम पीछे, तो हमेशा एक माइंडसेट तो रखेगा ना बंदा कि आगे बढ़ने के लिए, कि आगे का भी सोचेगा। मैं उसी सोच के आगे आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ें। दैट्स माई पॉइंट। वो तो दिखती हुई चीज़ है कि नहीं खेल रहे ग्लोबल के साथ, लंबा टाइम हो गया है। दे आर गेटिंग एक्सपोजर्स, वो अलग अलग टीम से, अलग अलग रीजन से टीम्स खेली जा रही है, वो चीज़ें हो रही है, वो तो दिखती हुई चीज़ है भाई। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने आप को कम समझेंगे। हम भी खेल रहे हैं अपने लेवल पे जितना हमसे हो रहा है। जब तक सोचेंगे ही नहीं तब तक करके कैसे दिखाएंगे? दैट्स द पॉइंट ब्रो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। जब खेलेंगे तब पता लगता है कितना पानी में होंगे। पानी में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होंगे पानी में, 2 बार पानी में होंगे, थोड़ा सा ऊपर तो उठ के आएंगे। यू नीड टू बी पॉजिटिव ब्रो इन योर लाइफ। मलिक हैव वॉन टू PMPL विद WZ एंड HE। वही तो बोल रहा हूँ, मलिक भाई तो मैंने कितना देख रखा है यार। गुड प्लेयर, लकी प्लेयर। मलिक जहाँ गया वो टीम बहुत, मतलब एक लक रहता है बंदे का। अच्छा भी प्लेयर है वो, बट वो जहाँ जाता है वो अपनी टीम को आगे लेके जाता है भाई। कितनी टीम्स देख ली मैंने जीतते जीतते। Let's check it out. You'll find one matchmaking. Furthermore, there are Wonder Season missions to complete. Each day, you can complete multiple Wonder Season creation missions. मिलेगी हमें इंटरनेशनल पर वो non-Wonder किस Season बात है, लोग creation बहुत है missions. बैठ Up to 100 points can be earned daily. लेट्स It's ओवर द worth बैटिंग। mentioning यस ब्रो, that टेंशन ना each लो time यार, you कोई play नहीं, the देख लेंगे जो भी होगा, Wonder देखा Season जाएगा। creation, you'll be evaluated based on your performance and For your a pretty good evaluation team, No determines Fear how many is points you earn. You can get up to 100 aggressive agile. He was in points. Do Fragger keep in list mind in that PMPL different CS. types of Okay bro. creations have different evaluation TN top 3 in criteria. PMNC, Complete help missions TN to for earn points PMGC and improve qualification. your tier. Each tier Oh, offers unique rewards, including AG, पता नहीं कब चांसेस मिलेगा, मिल जाए बढ़िया ब्रो, avatar देखते हैं बाकी। frames, rare मैटी sets, कॉपी। and more. Head to Wonder Season now and explore पानी away. खत्म हो गया यार That's it for बोलते this बोलते। introduction to World of Wonders Wonder Season. Get your friends and explore the Wonder Season together now. पता नहीं चांसेस, चलो छोड़ो यार अभी वो चीज। नाउ बैक टू द मैच। मैच नंबर 3 आई गेस मिरामारी होगा। पहला मतलब वाला मैच हमारा थोड़ा सा उस पे गया। Been able to climb the rankings, Twisted Minds coming back. The conversation continues as to who will take that top spot. The podium's looking crowded right now, Blank. And here are our top 5 Sandhawk performers.
Yeah, Enigma Galaxy with 9.5 average eliminations over their 2 Sandhawks they've had. But DRS में all man gun power है, XPL, Killer Whitey, Sleepy. Killer Whitey is a good guy. Killer Whitey, Gente मुझे काफी अच्छे लगते हैं. Player wise, ऐसा नहीं player wise. Why in PMSL CSA team don't push where in BMPS I see many slams or type. अरे कापन भाई मत करो अभी यहाँ देखो सामने यहाँ देखो लैन ही हो रहा है ये भी देखो किधर हो रहा है वैसे क्या है क्या फोन मिलेगा क्या गिफ्ट ब्रो प्लीज with a chance of winning the phone itself. Special activity for you in the Pmsl Emea Grand Finals. Keeping an eye out during the match. Count how many times. भाई मेरे को जितवा दो यार ये फोन Head on over करूँ मैं esports को बातचीत करता हूँ to drop your guess. रेजी को बढ़िया bro, he is good. 3 days of the finals, so not just in today, not just in yesterday, over all 3 days added together in the comments of esports PUBG EU. 2 मिनट रुको. Very own Infinix GT20 Pro. So stay sharp, keep watching. You might just walk away with the ultimate gaming phone. You may indeed, and that is what it's all about here over at PUBG Mobile EMEA. Not just the Infinix GT20 Pro, but that is a big part of it. But we are looking to crown our champions of the finals after today's games are concluded. RCB on a good game, that last one around in terms of those eliminations. And to be honest with them, the position on the map that it was a difficult place to really capitalize in terms of that angle of things. You saw भाई का ट्रॉफी लग रही है बे पीएमएसएल की बहुत प्यारी ट्रॉफी बनाई है गाइस कमेंट ऑन योर रिव्यू कमेंट योर रिव्यूज And they made the most of the chaotic position that they were in on that match. Chernok, क्या शेड्यूल है यहाँ पे मैचेस का? इरेंगल, मिरामार, Chernok ऐसा है क्या? Quite a lot up towards Pioneer. They have started to move apart from one another. The plane path from Hartin down towards Docks cuts right through the middle of the map, so nothing special there. On the plane path, we'll see where the circle decides to go for us. We've had some pretty mean circles a few times over on Sandhawk. The crossings to the Northwest Island have been treacherous time and time again. This is the last time we're going to be visiting चलो मैच स्टार्टेड. हाउ डिड डी गेट डोमिनेटेड इन डीके यार? जो चीज मैंने टीएनबा के लिए फर्स्ट और सेकंड डे पे बोली थी दैट सेम गोस टू डीके. मेरा पीएल वाला स्ट्रीम देख लेना चैट मिस. चलो भाई मैच स्टार्टेड. For drop clash temple अच्छा लगा देख के भाई ग्लोबल पे the top of the Northwest Island. We'll see if it's worth it depending on this next circle that comes on through. A lot of damage to be had without one nade though, and not a lot of first aid kits as well as bandages to go around. देखते हैं यहाँ पे पावर को इन्फो तो रहेगा इस चीज का. देखते हैं पावर कैसे एग्जीक्यूट करती है इस चीज को. इस बार पीएमजीसी का टॉप 5 बहुत मुश्किल है बताना भाई. इतनी सारी टीम्स पे कैसे बताएंगे? रुक जाओ 2 मिनट होल्ड रखो. Knows that he doesn't want to overexpose. There's plenty more barrels waiting in the grass for them. Rita on a secret mission out wide. Dorian seems to have heard something there. ओ भाई कुछ अलग जोन देखने को मिला. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेकंड लाइन जाएगा ये जोन. जो वेयर हाउस है पाइनान के नीचे वाला वहां पे लगता है मुझे गड्डी मिलती है यहाँ पे उधर की साइड को. Step up, and that's he does. Good couple of shots to the QBU. That thing hits nasty. 1 round left. That is going to make things hard for him. Right up against the rock. Might actually crawl out wide and pick up the weapon. So not only is it an elimination, it's also a resupply. It gives Doran a lot more strength as it. Prediction बोलते choke. मैं power. Where is power? Zeus losing Rita, losing that off angle. What's your views on नेपाली टीम? बढ़िया है नेपाली टीम भी हर एक इवेंट टू इवेंट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, लर्न कर रही है और एक अच्छे लर्निंग के साथ आती है हर एक टूर्नामेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. It's interesting, isn't it, for Enigma Galaxy, because a lot of the time you see them all the way on a. भाई ऐसी फाइट लेनी थी तो ना ड्रॉप फाइट होती है भाई. हमारे रीजन पे और ड्रॉप फाइट हम बताते क्या होती है. 15 सेकंड 20 सेकंड
ये ड्रॉप फाइट थोड़ी ना हुई यार, क्या यार ट्विस्टेड माइंड्स यूज इतना खुश हो गया था देखने को मिलेगा। ये भाई मजा नहीं आया यार, आपको मजा आया ऑडियंस? They need as much medical attention as they can get as the gang orcas descend down the hillside. राइडर ओपी कंपैरिजन करने का क्या मतलब है भाई, टेंस से कुछ बात का। Yeah, I mean, for Twisted Minds, they already find one pick. They know that Zeus is going to be looking for too much भाई more. लेनी प्रॉपर फाइट लो यार। Just head on out. Camp Alpha. Lots of loot to be had there. Because they need to get a move on down towards that south side. That engagement is going to be made a lot easier for them versus Zeus. If they try and challenge them on the bridge. Brute Force, Falcons all need to move down from this north side, as does 77. The first game in a while that Team Spirit's just been able to hang out in boot camp. Drop fights always should be always avoided. Rift by depending, मतलब डिपेंड करता है टीम के ऊपर, टीम टू टीम, बट ठीक है। इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसे ही होता है ग्लोबल पे, फॉल हो ही जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। बस यूज का बंदा नहीं गिरता तो ज्यादा बेटर रहता वो। भाई एक चीज सिंपल हो सकती थी, कैंप अल्फा की तरफ को चले, क्या फ्लैट पाथ था मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्फा चल जाते, फाइट नहीं लेनी थी। एक टीम टेंपल कूद रही थी, कूदने देते के बाद का आगे का प्लान करते। सिंपल। यहाँ पे कितनी अच्छी प्लानिंग हो सकती थी पता है आपको। छोड़ो भाई छोड़ो। अब मुझे नहीं पता इस रीजन से मैं इस लॉबी से मैं फेमिलियर नहीं हूँ कि पावर का कितना इन्फो था इनका, ये चीज का मतलब अच्छे से यहाँ पे कुछ एक प्लानिंग हो सकती थी जो एक टीम तो पक्का एलिमिनेट होती है अगर ड्रॉ फाइट भी नहीं होती। पर छोड़ो। अब मैं फेमिलियर न्यूज़ ज्यादा लॉबी के तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखा नहीं ज्यादा क्योंकि opener, but again he's exposed here, so if he doesn't have a vehicle to get away from it, needs to be very careful, and you can see he's just got to back off, knows that the trades are coming through। भाई मेरे से क्वेश्चन मत पूछो राइडर ओपी वाला चीज का, क्योंकि मैंने अभी मैं ग्लोबल में काफी टाइम से इनएक्टिव हूँ, मुझे नहीं पता है कि टीम कैसा कैसा मतलब खेल रही है, रीजन्स पे कैसे गई है। मैं पहले ही बोला कि मैंने टीम के बारे में सुन रखा है कि ये टीम ने अच्छा खेला है, हो रहा हो गई, और मैंने एक टीम का और नाम लिया था RRQ हो गई कि ये टीम अच्छा खेल रही है ग्लोबल के अंदर, तो दैट्स व्हाई मैंने अप्रिशिएशन दिया उनको कि अच्छा खेल रहे, कि कौन कौन है, कैसा कैसा सीन है। तो मैं अभी इस चीज का आंसर आपको नहीं दे सकता जब तक मैं अच्छे से देख ना लूं, तक वो आंसर देना बनता नहीं है मेरी तरफ से। जब मैं एक बार देख लूंगा, कंटिन्यूस देखना स्टार्ट करूंगा, मुझे भी पता लगेगा। एक टाइम था शायद मेरे से आप 2 साल पहले पूछते तो मैं इसका आंसर दे देता। अभी मेरे पास इस चीज का आंसर नहीं है, विदाउट जाने मैं कुछ भी बोल दूं तो वो चीज गलत रहेगी। हाँ दिन से गेम चार्ली फ्लाइट पाथ था, ओके भाई पता नहीं यार फ्लाइट पाथ क्या था, बट मैंने ठीक है होता है ग्लोबल पे, फॉल ले लेते हैं। STG is facing downfall after winning GC, सबके डाउनफॉल आते जीतने के बाद ग्लोबल पे। तो WVP का भी आया था शायद, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। टीम गोस टू S2G। उनका कुछ सीन रेस के साथ चल रहा था, प्लेयर के साथ, वो पहले भी जाने वाला था मैंने सुना था, उसके बाद वो गया नहीं था, फिर भी कंटिन्यू किया था उन्होंने, फिर वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी अच्छे से, फिर उन्होंने उसके बाद रेस को हटा ही दिया। अभी अब इंटरनली बहुत चीज होती है, अब जाने क्या सीन है। आयुष आचार्य सेम यार, 2 साल पहले भाई कुछ भी पूछते आंसर ऐसा देता भाई मैं, 2 साल नहीं 1-1.5 साल पहले। अभी वो चीज है नहीं यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे को आप बताओ तो ज्यादा अच्छा है, मेरे को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आप भी बताओगे, अपने इनपुट्स दोगे, अगर आप इस लॉबी से फेमिलियर हो मैं तो सीखूंगा, तो आप बताओ कमेंट के अंदर। क्वेश्चन पूछने से अच्छा आप मेरे को चीजें बताओ, तो मैं जल्दी से जल्दी सीख पाऊँ, जितना देखूंगा उतना सीखूंगा।
pretty happy right now, but it's जो देखते रहते हो, तभी तो मैंने ग्रुप बनाया गाइस। अगर आप ये फॉलो करते हो EMEA रीजन और एनी स्पोर्ट्स, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैं लिंक दे देता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड आप वहाँ पे चीजें शेयर कर सकते हो और हमारे ऑडियंस भी शेयर कर रहे हो और यू कैन डिस्कस दिस थिंग देयर। मैंने इसलिए ग्रुप बनाया कि मैं भी हर एक रीजन में, मतलब समझ रहे हो, देखता रहूं क्या क्या चल रहा है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, बट वहाँ पे हर कुछ बातें नहीं, सिर्फ ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें रहेगी। It's just a case of wherever you were able to grow. This is the link. If you want to join, you can join this. Just continue to play that. बट ई स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज है बस, नो बाहर का सीन, नो कंपैरिजंस। अपन को मतलब है स्पोर्ट्स से, अपन बात करेंगे स्पोर्ट्स से। किसी ने अच्छी रोटेशन दी, किसी ने सिचुएशनल अच्छा खेला, किसी ने अच्छे स्प्लिट्स लिए, किसी ने अच्छे क्रॉस फायर्स रखे थे, जैसे मैंने अभी चीज़ें बोली। टीम में जैसी दो टीम का क्लैश हुआ, उस टीम ने एकदम से उसके बंदों ने एंगल बना के क्रॉस फायर सेट कर लिया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करना, दैट्स वाई आई मेड अ ग्रुप फॉर ई स्पोर्ट्स थिंग। हर एक रीजन फॉलो नहीं होता है, तो मैंने ये ट्राई करा है कि हर एक रीजन, जैसे कोई EMA देखता है, कोई PL देखता है, तो हर एक रीजन का बंदा फॉलो करने वाला आओ बातचीत करते, डिस्कस करते, उन पे वीडियोस बनाएंगे। Started taking control of this hill repeatedly now, and S2G sit beneath them. I don't think RCB want to push this one out. There's no real incentive to here. They can just keep Someone Pmsl came to play and going to dominate. Getting out of this position, that is going to be good enough. They can maintain control, and they will of course be worried that RCB could also S2G rather, could third party an engagement onto their position. Brute force. Trying to move. खत्म है, 3 1v3 Maybe a 3 Neos. लक्स भाई तीसरा भी गिरना चाहिए यार, गिरा दिया। As Lux good for the spray down. 3 players from Brute Force fall like flies in the wake of Fireflux. Yeah, it's a pretty wild spray down coming through from Fireflux. भाई बहुत सारे मैसेजेस मिस हो रहे थे, आई एम रियली सॉरी। इस साल PMGC का फॉर्मेट चेंज आएगा, सो ही है PMGC का फॉर्मेट गाइस, बताना। वही रेड येलो ग्रीन टॉप 3 फाइनल्स, आई गेस वही फॉर्मेट होगा। 48 टीम्स। Chillest games that they've had in a while in Sanhok at least. Enigma Galaxy will bide their time down towards the southwest side, and they have been blessed with 2 सेम है फॉर्मेट इज सेम। लो जियान भाई आपका कर दिया हमने रिप्लाई। Nice to see. This is a brilliant spray down. I mean, in general, this is why we say so frequently it's generally a bad idea to rotate all in the same vehicle. If Fury was in there, he goes down too. PMGC में चेंज बनता है यार, ये फॉर्मेट कब का चल रहा है पुराना। मेरे को अभी भी याद है पुराने दिन जब मैं कितना देखता था वे स्पोर्ट्स, पूरा PMGC कवर किया था। कितने बंदे आते थे उस टाइम देखने के लिए भाई, 5-6 हज़ार बंदे लाइव पे। They have. Falcons are still in 15th place. I don't think they'll be moving Okay, up too much today. 77-12 And it is likely that Falcons NGX, ओके अब देखते हैं यहाँ से NGX कैसे खेलती है। NGX Heroes Falcon का भी टी हो गई FF के साथ, ठीक है, लेट्स सी। Season. In the meantime, a super hard shift back up towards Quarry. S2G have a great chance to take one of those compounds. NGX की बहुत प्यारी रोटेशंस हमने इससे पहले भी देखी है, लेट्स सी। Snack up one of those themselves. Funnily enough, इस मैच में क्या करती है hard NGX? shift is actually kinder for the teams that need to cross than it would be if it just centered up on the river again. They now know that they need to make that committed play over towards the North Shore. They spotted Navi. There fast. Okay. The fact that it's happening in stage 3 means that there's more open ground than there would Knock. be in a stage 4 rotation. So I feel like for Enigma Galaxy, for Heroic, for maybe even Navi if they can get out of this one, but I don't think that's super likely here. They're going to have a better chance now than they would do later on to make this move. Enigma Galaxy. Currently looking to push further up. Far side of the circle as per usual, but it hasn't deterred them in the past. In terms of getting a ton of points here on the Sanhok. Twisted Minds make their way over towards Painan. And is RCB to get further out than Verts? Nice setup to Team Navi. I am talking about the angles, जो NGX ने angles बनाए, मैं ये चीज़ की बात कर रहा था। ये चीज़ सीखने वाली है अंडरडॉग्स।
जो आप पूछते रहते हो ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती है, तो ये चीजें देखा करो। जो एनजीएक्स ने भी सेटअप क्रॉस फायर बनाया, 3 बंदे एक साथ खत्म। Been doing it very, very frequently. Crossfire, task, angles, again, another again. rotation gets clipped here. This time it's Zeus to find Good split. the shots over towards the rollover players from Nick Galaxy, trying to get across this Red river. X खत्म हुआ, कोई ना, Crossing. गाड़ी गई, जोन मिल गया। Take that back. Okay. They've just lost another. थर्ड जोन पे now just down to 1. एंट्री डालने का ट्राई, बढ़िया। Yeah, for Nick Is Noblu's the best player in KR it region? was okay. पता नहीं भाई। Up until it was. This is the work of two players, and it was a very bold crossing for them. Now Valo's down. Do they find the pickoff? Ralph's going to head outside, try and get him back up. Doesn't want to expose the angles, but any other team, this is a position on the map that you might like. कित्सुए मिक्यूमेटिक, मैं भी यार उनका फैन, मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी चीजें सुनी है, मतलब ग्लोबली बंदों से। He's not going to be able to find any damage even. I think Jafar इन्होंने मार भी दिया बात करते करते ही। just barely, and it's not going to be too much more than that. Heroic claim a compound on link not working. How is it Everybody possible? who's crossed now is going to have a better time. Virtus Pro have taken a knock. Twisted Minds, are they going to win the hot drop fight? I mean, it is frustrating for Virtus Pro because they just made that run out towards a compound on the eastern side, and as the second players who are playing backstop do get a knock on towards them from Twisted Mind, so it's a bit more delay, but they'll grab this position, they'll be happy with it. RCB and Virtus Pro HP he has get out from Painan unscathed, and Twisted Minds will take a position over there instead of them. ठीक है। IWNRX though finding lots of shots over towards S2G. This circle shifts back over towards Virtus Pro as well. I mean, it took us over to the north side, but now it's saying, well, only just. We've still got a lot to go. S2G. यार भाई मेरे को ना अभी जस्ट जोन देखा ना, पीएल इतना देख लिया, मेरे को डबल हेल्थ बार आ रहा है नजर में, मतलब। On their hilltop, they've been there since the start. Team Spirit, they still got a little spot over on the north side as well to play from. So potential to transition. They're going to wait for a third party. Lamborghini is best player, okay, bro. Minds push up towards RCB. Team Spirit, it's very likely you see at least a flex out scout. By the way, 354 लोग देख रहे हो live. If you are new to the stream, make sure to like the video and subscribe to the channel. Fast like, subscribe कर दो. Towards the west. I genuinely think that RCB's position is not horrible. And it does give them a lot of agency over towards the center of the circle. S2G managed to get that player back upon his feet. So not too much trouble for them there. I think it's mostly down towards that southeast side as teams are forced in over towards Trovo 2030, Heroic as well as IWNRX. अच्छा ठीक है, double health bar is already having impact there as Fireflux loses a player. In some situation, yes. In some situations, no. And Aaron desperately wanting to keep Darkin in the mix. मैंने कहीं इस सिचुएशन पे देखा है एक बार, आई गेस RSG में थी, फैल्कन के या किसी एक बंदे ने क्या क्लच मारा था उसमें, मतलब किसी, ऑल यस ही इज गुड प्लेयर ब्रो। पीएल कौन जीता? TJB थ्रो कर दिया TN1 ने। Ketch can't quite connect onto the back lines, and Magnum moves forwards. Nade's now starting to cook. Oh, nice. Damage pouring on in, and that is an excellent pick up towards Ketch, but there's an immediate answer. Lux from downhill as well, layering on in. Some defensive strategies there coming on through, but Solk's low. The burn down on the blue zone is coming through, and Limbo Boom does go up to this watchtower, looks for the spray down, gets that knock, gets that flush, and 3 players move on for 77, but there's players ahead of them too. IWNRX are going to be watching this one like a hawk. Not like a Falcon though, because they're out. हिल बैटल पॉसिबिलिटी भी खत्म होगा, हाँ होगा, बट कई बार क्लच सिचुएशन बना देता है यार वो। मैंने देखा यार एक मूवमेंट, मैं कहाँ बताऊँ आपको, बहुत जगह पे क्लच मूवमेंट बनाए उस चीज ने, क्योंकि उनका जोन टच हुआ, उनका हेल्थ नहीं गया, वो 1 HP बचे थे, उसी एक मतलब 10 HP बोल लो या 1 से 10 HP के बीच में उन्होंने क्लच मार दिया, 1v2 1v3 कर दिया और इवन चिकन निकाल दिया। ये RSG के एक बंदे के साथ भी हुआ था। Through towards Trovo 2030, and they're just down in the dirt, down on their luck too. Terrible time here between IWNRX and Heroic on the south. But IWNRX, they're going to be eating some damage as Heroic continue to fight through Trovo 2030. A knock is found, and Salem does have a shot. Not anymore though, will get taken down. Kevin getting knocked, and kind of on the flip side as well, puts a pause on this fight. And Zeus on the south, they also draw the attention coming back down from Walsh.
Ooh, nasty nade for another Order window last from zone Aaron. clutch. Order का एक RSG के Onto बंदे का Aaron's भी way हुआ from है. Darkin. That one's a little bit better onto Jafar. Immediately Aaron will follow up on that, finding the elimination. 77 are down and out as Zadira, the final player for them, is removed. Now we have Twisted हो गया. Minds as well as Team Spirit currently still in this match. ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया guys. Tied at the moment for the first time in a while. Twisted Minds will take back that first place spot. Oh, Darkin not able to escape. Zedwolf's there, latching the gate on the cage. Will not be allowed out. Eren making a mad dash, and Swain caught by Fadan. Does Falcon have two lineups? I don't know यार. I guess lineup तो same ही लग रहा है, नाम same है. Maybe registrations अलग हुई होगी, different owners होंगे. Zedwolf trying to move through the blue zone. Difficult time to go. बाकी पता नहीं. एक Falcon दोनों के मतलब first name similar है, second name में कुछ difference है, और उसका भी फर्क पड़ जाता है. IDBNRX out. कैसे होगी भाई? थोड़ा तो याद होगा. यस केशव भाई, बोलिए बोलिए. How are you? What's up? क्या हाल चाल? There is that big jump up over towards Na'Vi, though they're not having the hottest of times recently. Looking to pump further into this one. Eren, final player remaining. Good nade over towards Bishkek. MVP from yesterday looks to put another elimination point up on the tally. 2 more nades remaining. इनवाइट स्लॉट का कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है यार. मोस्टली आईएचसी रहेगी यार, डिफेंडिंग चैंपियंस. Pmsl has the immediately as soon as you get that off angle for RCB, he's just going down. It's unfortunate. I mean, maybe leave him there for a little bit longer, soften Virtus Pro up, because now they can get Bishke back up, they can get that healing done nice and safely, and it is 5 teams, all with 4 alive here, blanking for the final circles. S2G, it's RCB once again, back at it. With great angles down towards them. It would take a gargantuan effort right Old now versus new. to stay out of dodge inside this compound. Swash as well as Kelsey still up, but great tags coming through into the smoke. RCB crunching S2G in. Team Spirit and Twisted Minds in the meantime. Gonna go for a fight. Effect steps up. The knock is there. The roll around the side and Lord's up to the rock as well. The drop down from Effect. They go 1 for 1 on the trade. It's up to Doran now against Team Spirit. Backlines. There's 2 of them to deal with Nomi. Nice one, yeah. TS, nice one. They're gonna have to pick him up. They're gonna have to move forwards on the crawl. Zone आ रहा है. Time में easy settle हो जाओगे. Settle हो जाओगे. 20 सेकंड है. Be really important for this team moving forwards, but you can't waste time. They've just spent so much time going for that res. He has to pick him up and move in. I mean, that was probably the plan. I mean, for Kitsune, it was a little bit more difficult to work with here. Purely because he was so low on HP, I think by the time... If there is OG player in current scenario, yes है ना ये? Looking up towards this way. ये अपना letting Effect just TS में था. Towards the circle. Their best bet here. As long as he gets closer. Silas is also a OG player ही बोल लो उसको. Effect needs to immediately hit. अरे टिक्सी कित्सुने वाला रोस्टर. इससे ओजी क्या चाहिए तुम्हारे को? मैटिक, यस. मैटिक. इवन इफेक्ट भी एक तरीके का ओजी प्लेयर ही बोल लो यार. काफी पुराना प्लेयर है इफेक्ट भी. बहुत अच्छा ये एमवीपी प्लेयर है इफेक्ट. आज से कितना टाइम पहले देखा था. Gets that flush confirmed. No res available now. Virtus Pro though. Oh, look at this broadside from Bishke. Able to find Nomi. A lot of damage over towards Effect as well. Matic the only one safe from it, but for how much longer? Because right on the northern side of the circle, Wild steps up but is immediately rebuffed here. Silas with a nade in hand. He's cooking. Needs to find Matic as the rest of Team Spirit going down. That's nice. It's not good enough. Matic is still there. He's still alive. First aid needs to come now. Lagi first aid. उठ जा. Pretending as if he went down, it would feel. फंस गया बेचारा यार. क्या करेगा? ले लो किल ले लो वीपी. Second place is absolutely massive for him. Another first aid kit on side. चिकन डिनर तुम्हारा ही है. But it might be too little, too late. He steps out to attempt to get the spray onto Azel, and he might have had it if he was a little bit earlier. Not going to happen though this time around. Virtus Pro putting in the hurt. But yeah, good city. भाई यार, if you're new to the stream guys, like and subscribe. यार इस बार बड़े shuffles हुए यार यूरोप रीजन में. इधर का उधर, उधर का इधर. मिक्कू पाजी अरे यार
and take याद दिला दी down तुमने their पुराने वाली। opponents on the hot drop. Meet him in the early game. Nah, we'll see you in the final circles. Yeah, I mean, for Virtus Pro, good chicken dinner for मिक्कू them. पाजी, It's what they कित्सुने, needed for a while, obviously, a little टिग्जी, bit more confidence, the but it's OGH good to VVP, Gaming get from the Gladiators, Gladiators, Navi, as per क्या usual. रोस्टर था भाई ये? Team Spirit's some incredible resilience is what they are very good at. I mean, over towards that north side, there was a potential. भाई PMGC नहीं देखे क्या तुम starting के OG players? To spray down to a Zell, but we'll let bygones be bygones. Twisted Mind started off nicely with a little hot drop action over on the northern side. They picked up a point, and we saw them getting deep into that game. A lot of high elimination crossings found. This was the spray down over to Nick the Galaxy. Good split, by the A way. lot of teams This losing was players the on good that split. transition from the south shore to the north side. It was always destined. Twisted Minds का हुआ था ना drop clash. Twisted Mind and Zeus दूसरी टीम थी. Southeast flank, but could not Kunina break Power, into that no final me. circle stage. Yeah, I mean, for S2G, it was a good lineup that they had early. I mean, this play from Masic was very, very good. And that nade goes off, and there was a chance on that rock for him to take second place for himself. मैटिक एंड कित्सुने टीम स्पिरिट में है, टिग्जी एंड मिक्कू जीजी में थे, बट जीजी ने डिसबैंड कर दिया अपना फुल रोस्टर. Adding up to 14 total, and it's I mean, we wanted Virtus Pro to have done this from the start of the finals, but they had such Still Zeus is was so first day, dangerous back and it was then. only Godless one Zeus match I from see yesterday heavily. Oh भाई, that kind Zeus of, भाई. redeemed भाई them. उसके They were मेरा ना able to इंस्टाग्राम win and जाना, immediately followed it with जब 50 वो plays. PMGC हुआ था ना, तो काफी A टीम्स ना 0-point Zeus के game. बारे में बात नहीं कर रही थी. It's good to see that they मतलब are उस stepping टाइम back पे up, यही and चल रहा था quite a सीन few की. times now they've been in these later circles उस टाइम today. ये आपका कौन सी टीम थी? It's a little bit too little too late to claim that नोवा. top spot. Luckily for them, though, of course, there is नोवा that के बारे में बात हो PMGC रही थी, points नावी के बारे में बात हो रही थी उस qualification सीजन पे. spot that at the moment सीजन पे they मैंने sit बोला था in and कि will एक hold टीम है it जो कि unless नाम है RCB Zeus. get, I think it's like उस 100 टीम को ना points or सब मिस more, कर रहे हो. more वो than किल्स Virtus निकाल Pro रही in थी, these finals वो alone. किल्स निकाल Team रही थी Spirit, they put और वो up 11 कंसिस्टेंट points पॉइंट and they निकाल रही do थी. not want और to let पोजीशनिंग that वाइज top सीन कर spot रहा था. slip. वो #2 Brute #3 force, Twisted #4 Mind still हर मैच pursuing ऐसे it, एंड but कर रहे थे this और is a किल्स great निकाल रहे result थे. for Team Spirit. और वो क्या कर रहे थे? चिकन डिनर नहीं ले रहे थे. तो वो ना उसमें नहीं आ रहे थे. तो मैंने उस टाइम लगा था मेरे को ये टीम अच्छा करेगी. उस टाइम की जो Zeus एब्ली वाला रोस्टर है, मैंने डाला भी था उनके लिए स्टेटस उस PMGC में. मैंने कभी इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने डाला था उनके लिए, अभी भी याद है मेरे को. मुझे लगा था कि ये टीम अच्छा करेगी और Zeus रह गई थी. Zeus जीत सकती थी वाला PMGC. उसके बाद उन्होंने फिर साउथ एशिया रीजन पे गए, फिर वहां पे उन्होंने डोमिनेट किया था. PMGC Europe points. Then if they didn't get that, they would then get the PMGC overall points, and then a first place here would see them qualified anyway. Obviously, the priority goes to that Europe spot, but you're right. It's great to see that they're not letting themselves rest on their own laurels. Damage graph here. Where is Virtus Pro? Oh, right down at the bottom there, with 4 eliminations, 899 damage done. RCB doing some heavy lifting. Yeah, very much so. I think for RCB, they were very, very good in the game. Another 10-point match for them. A second place as well. I think that they'll be pleased with that one, John. This is good for them overall. And getting further up the lobby. Because again, what we are looking at for RCB right now. एब्ले भाई गलत थी, रिटायरमेंट ले लिया. अब कोच है EHC का. एब्ले यार मतलब जो Zeus की नींव वैसे एब्ले ने ही रखी थी. एब्ले जो भी नाम है उसका. वॉच ओसा लेटेस्ट क्लिप. Zeus अरे ओसा स्ट्राइक दे देगा यार. You are top 3 aggressive team भाई. कोई नहीं अभी. वॉच ओसा लेटेस्ट राइडर ओपी भाई. ओसा स्ट्राइक दे देगा. तुम हटवाओगे? बताओ. भाई अच्छा कंपटीशन है. स्पिरिट 120 149 142 ट्विस्टेड माइंड ब्रूट फोर्स 131. गुड वन गुड वन गुड वन. 3 मैचेस हो गए. 3 मैचेस और बचे भाई. ये स्ट्रीम 2 बजे तक जाएगी क्या भाई साहब? यार दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी. 111 IWNRX, remember they already have that Turkey qualification spot, so Virtus Pro, they already have the overall spot locked in a little bit. Fireflux next behind, so 111 to 87 is the difference between qualification or not for Fireflux here. Teams are starting to fall behind. थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. टॉप 20 PUBG मूवमेंट्स चला दो. मैच तक. I think for S2G it's getting worse. सच बोल रहे हो? लगा दूं? गाइस देखे फिर
this finals. Let's take a look at our PMGC milestones, though, best 'cause it's of only getting better PMGC for you guys डाल at देता हूँ, home. वो For देखते हैं. concurrent viewership, we will be getting आ जाए, 5 करे, sets of rewards, स्टार्ट करेगा, including जल्दी बताओ yes or no. BT बेस्ट ऑफ PMGC t-shirt साथ में and देखते हैं, आ जाओ करते parachute, हैं. Experts 3 loop, Infinix Hot 50, 2 मिनट रुको, Infinix GT 1 मिनट रुको. 20 Pro with that 140,000 viewer mark, and an Infinix GT 20 Pro and Watch 3 plus 190,000. So a lot up for grabs here just for watching the tournament. A lot up for grabs here of course, you just will for need to watching the head over to tournament. esports PUBG MEU, comment hashtag outplay the rest if you want to be in with a chance of winning these prizes. That is hashtag outplay the rest, as we are going to Guys, sorry, इसको म्यूट कर रहा हूँ. आ जाओ. बेस्ट ऑफ PMGC 2023 ये वाला मैच तो मेरे को भी याद है, if I'm not wrong. मेरे को देखने OG moments देख. OG moments, historical moment, OG moment, बेस्ट क्लचेस 2 साल पहले, टॉप 20 क्लचेस. और पीछे चलते हैं यार, और पीछे. तो अपनी स्ट्रीम है गाइस, तो बड़ा सही बंदा है यार. पबजी मोबाइल हिस्ट्री के बेस्ट वो द गेमर्स कॉर्नर. ये कौन है भाई? ये स्ट्राइक स्ट्रीक ना दे दे यार. ऐसी स्ट्रीम लगानी पड़ेगी जो स्ट्राइक स्ट्रीक ना दे यार. ये वाली देखे. लेट्स वॉच दिस. This is the final round. Come on. लेट्स वॉच दिस. स्किप्स. वो साला लगा के नहीं देगा स्ट्राइक. अगर दे दिया तो हेडर बैगर दे दिया तो. लूप्स वाज आल्सो अ ग्रेट टीम बैक देन. लूप्स ने काफी टीम चेंज करी. ये मैच मैंने लाइव देखा था यार, इसकी क्वालिटी कहां से बढ़ी. ये मैंने मैच लाइव देखा है. Two players are going to go down from the Knights. The utility too strong from S2G, and now it's just Coops in a 1v3. Coops. Oh, got 1v2. He's got 2. No way. Coops running out. Bhai in the sahab. open, 3. Between the Volley. Knights and S2G. Oh, a big volley. 2 players are going to go down from the Knights. The utility too strong from S2G, and now it's just Coops in a 1v3. Coops. Oh, got 1. 1v2. He's कूप्स got का 2. नाम लिया और कूप्स No स्क्रीन way. के सामने. Coops running out in the open. The confident movement. He wins those, baby. Coops. Should not go in all by himself. He should wait for the cavalry Definitely to not. arrive right next to them. And if he goes all by himself, he's going to get thirsted instantly. So his stars, you need to play things out a little safe. But instead, it's Xenox who gets a little impatient, but he still strikes No, back. he's not. What? Return! I was going to say, if there's any player you want from the Pittsburgh Knights in the CQC, it is Xenox, one of the best CQC players in the game. Secures the point. He's an FVP. He's going. He's hungry. And he gets the squad wipe. And he gets the squad wipe. As a pro player, then having a wide open shot. And the Hello, second Sanif you Shai bhai, look, what's up, just क्या हाल straight चाल? ear hold. Instantly कूप्स का knocked नाम off. लिया, कूप्स स्क्रीन के सामने आ गया और क्या क्लच निकाला भाई. Is all the way to the bottom, and enjoy is it भाई having सब a S2G को मार रखे क्या बेस्ट with क्लचेस. S2G, literally. Line is super low right now. A sliver rate speed. Guello tries to stymie the flow of Bigatron players as they move forwards. That's a cheap little angle as Lapis goes down. Yeah, I mean, for Yuhai, he has been the one leading this charge at the moment. Zuxi finds Divine, and now it's just a matter of time before the rest of Reject do fall. I think BTR realised they need to do something quickly. भाई ये BTR ने क्या किया? The man of the hour. He's found 1. He's found 2 on the spray down. He's Oh my God! It's Ragey with the 4v1, taking down the whole of Bigatron. हैप्पी दशहरा भाई. बट BTR ने क्या किया ये तो BTR का बहुत बड़ा ब्लंडर था. He doesn't want to give away his location, but he's going to have to go ahead and see this wide open player. Nice little lay down, not going to be fast enough. Can Papi Potro be able to get up here and get this knock? Frozen's got the Vector. Where is his team? Actually, does he need a team? Nope. He is putting in so much work with his Vector. The jump 180, baby! Frozen! Get the Quadra. Can we get ये this बंदा all बहुत right? तगड़ा है. फ्रोजन Squad wipe. इफेक्ट. Scream. ये बहुत तगड़े बंदे हैं. Throws in बहुत ज्यादा Twilight तगड़े Reel? बंदे. 27 pulls. patience. Takes his Gotta time. go for it. He's got to Gotta rock go for it. again. You rock. He's been the rock Poppy. Oh, he gets a Nice. jump shot. He gets the squad wipe. Squad Frozen. Dude! That quick
teleportation blows the vehicle up. As to work as a solid cover for him. And Frozen does realize he's getting pushed on from both these sides. And Unicorns Love trying their best to hold this off. GK first, the only man left alive now. And he has a lot of burden on his shoulders. He needs to do some heavy lifting. But Sheik's is thrown back or charging him forward. And I feel like this is what Sheik does get. Toes, Dave, the toes, able to catch it underneath that dossier. And they go down there. It looks like we Reggie को बेस्ट प्लेयर ऑफ 2024 2S टीयर MVP टाइटल्स हो गए। ये क्लचेस वाले मैचेस देख के लग रहा है कल ही हुए हैं, 3 साल हो गए यार सही में यार। शुभम भाई Is pinned down. It's a 1-on-3 situation actually. Lin is all the way in the back. He can try and go for the support play, but no, instead is GK first, quite quick with that peek. On top of the rock, is able to take down another man though, but over here GK first finds another one. This leaves made on Unicorns of Love. इसमें क्रिप्टो भी गया था रोल किसके साथ खेलने? Making sure or hoping at least that his position haven't been revealed yet. He can try and go for those just trigger discipline plays, but guess what? GK first single-handedly is just demolishing, is dismantling Bullet Chapton. यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है? हर एक क्लच अगर आप देखोगे, हर एक बंदे ने टीपीपी अपने एंगल्स को कितने अच्छे तरीके से यूज करा है। जितने भी क्लचेस आपने देखे हैं। Iconic duo, right? The center of the circle and Tongja Bao right now. Nade, oh, that's perfectly placed on the Paraboy. Reject, hold it out for now. Suppress this line, but more nades continue to go through. Jimmy in danger now. A beautiful nade to the back finds the flush, and King goes low as well. 2 players from Reject swelling over the hillside. One goes down, but is traded evenly with Jimmy. King now up to bat, looks for the shot, but not going to find it. Has to go for the weapon swap, and the drop shot is good. Nova taken down by Reject. Mentioned the blue zone going to be applying pressure. Alucard making that U-turn, popping out with the DP, but immediately taken down. My God, bro, ये क्या है? फिर से देखना है भाई, ये क्या है? Going to be applying pressure. Alucard making that U-turn, popping out with the DP, but immediately taken down. Immediately Manic! Let's go, baby! Whips and busts out the bolt action with the quick snipe and finishes Ghost! Manic's insane! He's on fire! In the nick of time. Still at least got the confirmation on that kill. All times being utilized. Jay still taking a decent amount of damage, fair bit of amount of damage, and he did realize one man from the side of next to is just giving a lot of information away. And Polo with that buggy trying to run that last man over, but that's not going to be the case. Instead, Polo falls down, and while the kill gets confirmed, oh no, Exit, you cannot really give these kills away like that because next to they're hurt, and they're going to make sure they're going to punish you no matter what kind of angles they can. The Hot takes another down. He might just be able to clutch this. He might just be able to clutch this single-handedly. Yes, he does. But the Wall of Death is doing quite a lot of damage, and he will go down to the blue zone. Holes in the floor, and they were surrounded, so well done to Dig Xavier there to be able to make that one happen. Nova going versus Infinity. Actually, oh my goodness me. Hang on a minute. It's a 1v3! 1v3 Nova! My goodness me, Infinity, you've got to be happy with that one. Gary Long! And Manic goes down, finally! एटन ये भी काफी अच्छा रोस्टर है अमेरिका से। एटन 7 87। Oh, Mythic's got the MG3 though! What can you do up against it? You can't do nothing! It's all Rise Esports, baby! Top of the hills. Let's see. मैक्सिमम में से वेस्टर्न रीजन के क्लचेस कवर करे, शायद वेस्टर्न रीजन का बंदा होगा इसने वीडियो बनाई है। Surprise is what Luke just said right there. Able to practically save the day. Can we get the last one? Yes, we can. Frankie, a prolonged spray coming in from Pmgc, but he will be finished off by NC2. Stalwart now against their God, Tony is a good player. Yes, bro, Tony is a good player. Of 628. Bas attitude or arrogance going up against each other, but 628 have a massive advantage. It's a 1 versus 4 for Scry, and as incredible as this player is, it is looking very, very unlikely. 628. Oh, Ying! From behind! ये बढ़िया लग रहा है कुछ। No way! No! Surprise! Ying! Oh, the crowd! Two up, the down! भाई इससे बढ़िया ब्लेंडर क्या हो सकता है किसी टीम के लिए? Throwing hard. Oh, Randy. Heel right there, sneaking up behind. Ying not done yet. Up against Garrick's, go for that spray down. 2 bullets on the M4. Got the reload! ये सच में बेस्ट था। Have evacuated the premises and Tony K alone. भाई टोनी के तो क्लचेस जितने देखो कम है भाई। ये बीस्ट मोड पे था, जब फेस पे था इसने अकेला PMGC कैरी किया था भाई। वो वाला सीजन देखना आप, जो उसका लास्ट सीजन भी था शायद फेस से।
Gonna group up, three firing into the smoke, hoping to find him. It is nowhere nearby. Tony K. That M249 could shred them. He's gonna go for the play. Oh, I love that. Tony K finds one, runs back up again. Now Scry. He's go for the res. Going for the long. Guys, match is about to start. I guess इसको continue करेंगे. इस match के बाद. Another knock for Tony K. He's found 3 members of Storm. खत्म. बढ़िया. अरे guys, if you're new to the stream, make sure to hit the like, 1000 like जल्दी से करवाओ, जल्दी से. Start हो गया match. This Tony was different prime. भाई prime Tony के का भाई I don't know आप में से कितने लोगों ने देखा है. जितने भी आप देख रहे हो गाइस, जाके PMGC देख लेना यार. वो सीजन आपका शायद फर्स्ट सीजन था जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था रेड ग्रीन येलो वाला सीन, या उससे पहले जिसमें शायद नोवा सेकंड टाइम जिसमें जीती थी उसमें, हाँ उसमें शायद फेस को उसने सिंगल हैंडेड कैरी किया था. आई गेस PMGC सीजन 1 और सीजन 2 जाके देखना, फेस से होगा वो बहुत तगड़ा सीजन था. बट हर एक क्लच में जो भी नए लोग आपको देखने को क्या मिलता है, कवर का जब आप सोलो बसते हो एक TPP एडवांटेज प्लस कवर का जो भी आपके पास एक पत्थर हो, आप कैसे उस चीज़ का यूज़ करते हो. क्योंकि जब आप सोलो होते हो ना तो टीम के गलती करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ऊपर. कई बार टीम फिर जाती है. याद रखना हमेशा जो फर्स्ट बंदा लास्ट बंदा बचता है ना, एक बंदा बचता है, वो हमेशा ब्रूटल हो सकता है किसी भी टीम के लिए. सो भी हमेशा उसको लाइटली ना लेके उसको हमेशा से थोड़ा सीरियस लेना है. क्योंकि अगर एक नॉक देगा तो फिनिश ही करेगा. आप 4 मैन थे, 3 मैन भी कर सकता है, 2 मैन कर सकता है, इवन क्लच भी निकाल सकता है. TPP एडवांटेज प्लस कवर का अच्छे से यूज हर एक बंदे ने वही करा है हर एक क्लच पे जो सोलो बचा है. चलो गाइस देखते हैं टीम S2G. यस नया नो इस पे S2G यस नया पावर तो घटका जाती है, पता है. VP ठीक है. नावी कितने जा रही है? नावी जा रही मिलिट्री जा रही है. मिलिट्री जा रही है, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट माइंस मिल्टा फार्म पैनकेक स्प्लिट शेल्टर FF, ठीक है. गुड वन. Stronghold positions in OP dip near Fireflux right now. The compound that sits up. I wish money makers were in finals. IC was good form. Okay भाई, तो टॉप में देखना है फिर से जरूर भाई. Yes I remember. PMGC 2021 में था. He carried phase. Yes. मैं OG जनता रात के 12 बजे अपनी देख रही है हमारे को, बहुत बड़ी बात है. याद है टोनी के का सीन? मुझे भी याद है, बट मेरे को उस टाइम बुरा लगा था, पता है. एक प्लेयर के लिए भाई उस बंदे ने भाई जान लगा दिया और क्वालिफाई करने के लिए ग्रैंड फाइनल्स में. मेरे को आज ही मोमेंट याद है भाई. मेरे को इतना बुरा लगा था ना उस बंदे के लिए. बहुत कम बंदों के लिए बुरा लगता है. PMGC सीजन मेरे को एक्यूरेटली शायद सीजन 1 और सीजन 2 होगा. देखना भाई उस बंदे का एफर्ट. सोलो बच रहा है, टीम पॉइंट निकाल रहा है, एंड जोन जा रहा है. क्या एफर्ट दिया था भाई उस बंदे ने. वो होता है मतलब एक एफर्ट देना. टोनी के OG भाई, OG पूछ रहे थे ना तुम लोग टोनी के भाई. हैटिक टिक्सी कित्सुने ये तो है ही बंदे, बट कांट इग्नोर टोनी के. ऑल्सो यार दे आर OG टू. ये रॉफ आपको दिख रहा है, अभी का प्लेयर थोड़ी ना रॉफ. NGX जब से PMPL अरेबिया हुआ था फर्स्ट सीजन एडिशन पे GXR भी गई थी खेलने, तब से इनकी टीम बनी है. तब से खेल रहे हैं लॉन्डे. Out of 1v4 Shanok. What about DRS? अच्छी टीम है bro. DRS is a good team. The 5 games that you've got remaining. Sure, you might be able to do it with the 4 games you've got remaining. Up to 3, I don't think so. I think this is where I'm calling. कभी तो सबका मूड अच्छा था. ओल्ड नावी ओल्ड भाई, अरे यार वो PMGC का सीन था. उसके बाद उसके टीम पे नावी पे भसड़ हुई, इसको बेंच किया. उसके बाद वो चीजें नहीं एग्जीक्यूट हो पाई. उसने बहुत टीमें चेंज करी. इवन वो इस पे भी गया था रोस्टर पे, ट्विस्टेड वर्चस प्रो पे गया और लोन के लिए. वहाँ पे वो अच्छा खेला. फिर से उसने नावी से कॉन्ट्रैक्ट एंड करा. फिर वो एक और टीम बदला. बहुत चेंजेस करे. अभी पता नहीं कहाँ है ओल्ड बॉय. मेरी तो OG मूवमेंट्स ताज़ा हो रहे हैं. मतलब सारे पुराने चीज़ें देख. टीम्स को कब देखता था भाई, अभी भी देखा है बीच में, बट बीच में गैप पड़ गया था. बहुत चेंज हो गया यार. ऐसा लग रहा है अभी इस टाइम पे कि मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे.
इस रीजन को देख रहा हूँ तो। I mean, so for Heroic specifically, for instance, there's 41 points difference between them and the bubble position. So even if they get 20 points, if Na'Vi and RCB are able to get 5, 6, then they're still a massive amount behind. They're still a big chicken dinner behind, even if they're able to get 20 points on this match. So it's What about अरे लूप्स पुराने वाली, लूप्स पुराने वाली भाई, वो था रोस्टर भाई, वो तो उसमें भसड़ हो गई। But that roster of loops में भी शायद वो आज एग्जिस्ट करता तो वो शायद प्लेयर्स रहते ना एक साथ, वो एरा था भी उनका, कारिलो, गोल्डन, योसाकी। अरे सैंग भाई व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, मैनी कांग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है डीआरएस क्वालिफाई हो चुकी पीएमजीसी के लिए, मतलब पैसा, वो गाना नहीं बना है पैसा, वो मेरे को लगता है डीआरएस के लिए बनाया गया है। आपका दोस्त तो नहीं है वो नेपाल से ही है ना वैसे भी, आप, मेरे को लगता है आपके लिए बनाया था उसने सैंग भाई। बट सैंग भाई अगर आप रियल वाले होते तो आप मॉड होते, मेरे चैनल पे आप मॉड थे, but you are not mod here. Let me introduce सैंग भाई। आप रियल वाले हो क्या? व्हाट्सएप पे मैसेज करो अगर रियल वाले हो तो मैं मॉड बनाता हूँ। Old BTR is beast, yes. RCB transitioning away from Roshok. 77 will fill in behind them. Team secret from Malaysia, yes bro. Fairly close to the center. SUG playing that heaven compound. Guys, by the way, अगर ये सैंग भाई रियल वाले हैं, so he is the करता धरता of टीम DRS। जो DRS अच्छा खेल रही है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ सैंग भाई का भी है। इनसे हमारी बातचीत होती रहती है टाइम टू टाइम, तो हमें ग्लोबल के बारे में, अपने रीजन के बारे में चीजें बताते रहते हैं, सो अच्छा लगता है जानकर चीजों के बारे में। यार इंडिया स्लॉट मत पूछो यार, इताची तुमको तो इतनी बार बता दिया है फिर भी तुम स्लॉट जी नहीं, क्या लिख रहे हो ये? हेलो भाई, रोटेशंस हो गई है टीम्स की, अब थोड़ा मूवमेंट, बातें बहुत हो गई। Definite position just in case it heads over towards that northern side, but yeah, likely this team will have to move. यार पता नहीं यार एस्टोजी के साथ क्या हुआ, मैं भी शॉक में हूँ थोड़ा, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ। Trying to keep control, and Falcons out to their west that they're wary of. This definitely is a symbol that they want to keep that edge style. They are not going to be sending into the center. Expect to see them. PMWL 2020 Ryzen अलग ही लेवल पे था ब्रो, वो लेवल उस टाइम पे सबके निकले थे ब्रो BTR में। And they're getting on the road again. Who's Lil and injured? Hope will get soon. Who is Lil and injured? How? Jian? Who told you? TJ भी हुआ? Side of Yasnaya, push it on the north edge, or get across to the west of Yas Fields and try and send in behind teams like 77. Na'Vi, they've yet to cross from the military island. They're looking to mount up that approach now. Yeah, because it's kind of on the edge there as too. There's not a lot of teams that were opting to go for a camp on that side of things. Instead, a little bit more willing to allow Na'Vi to head on. अरे सैंग भाई ये रियल वाले ही है यार, सैंग भाई रियल वाले ही है। सैंग भाई को मॉड बनाते यार, सैंग भाई गिविंग यू मॉड, बट आप मॉड ऑलरेडी थे यार, आप कैसे हट सकते हो? लेट मी मेक यू द मॉड। सैंग भाई यू आर द रियल वन। स्नीकर वाली बात आ गई तो हाँ आप रियल वाले ही हो यार, ये बात हम दोनों के बीच में ही थी। The shelter position right now, nice and powerful, a lot of hills between the lumber yards. Giving you the mod bro. Mines currently sit all the way over to Potato Hill. अरे वो मॉड नहीं है ना, मिस हो गया, डैड मॉड दे रहा हूँ। Trying to find their sanctuary. सैंग भाई यू आर मॉड नाउ टेल। सैंग भाई टॉक्सिक यार ब्रो, सैंग भाई for this game. गलत बात है, मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी टीम की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, that is wrong. We've had some interesting word, John, and I am currently having a look at it. अरे फैल्कन ने नेट से S2G को उड़ा दिया।
किलफिट ऐसा बता रही है कुछ। Qualification? Maybe curious. Let's memorize old golden days of PUBG. We can talk, bro. We can I talk. think that's as we expected. Ronnie Raid. अरे अरे I think that No. पाजी Raid. that's completely different to what I expected. So I'm gonna Old megastar from Thailand and don't during the spawns break. got effect. we अरे are. अरे That's a very interesting, completely different to what we were expecting. So I'm going to refocus on this. I'm going to assume that what we've been going with is correct, and then during the break, Ronnie. I will go back through the rule set, I suppose, to see what is going on, because we've got some discussion as to whether the teams that we think are qualified क्या are बात है qualified, or रोनी there's पाजी teams qualifying. बहुत बढ़िया Let's wait and see. सारे के सारे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जो भी नए लोग हैं फ्राइडे है फ्राइडे भाई फ्राइडे वैसे खत्म हो गया And we need to focus on this game because it's important. तू निकलता है मेरे को मॉड मैं क्यों निकालूंगा आपको मॉड से सैंग भाई फिर वही वाली बात कर रहे हो आप बाय द वे हैप्पी दसाई यार दसाई का गिफ्ट का है मेरा यूएस सुपर चैट दिखनी चाहिए मुझे चैट के अंदर यार सैंग भाई क्या कर रहे हो आप थैंक यू सो मच गाइस जो भी रोनी भाई अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो थैंक यू सो मच फॉर द रेड आएगी भाई ओपीआर आप ओपीआर भाई जो भी नए लोग देख रहे हो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल Look at the game. Yeah, I'm sorry. शिफ्ट बढ़िया Skew if. Yeah. I'm going to assume that what we've been talking about on stream is correct. फैल्कन क्या करती है लेट्स सी बीएफएफ भी अच्छी उस पे थी कहाँ गायब हो ब्रो कहाँ गायब है ब्रो वॉच पार्टी आज भाई हमने पूरा 10 घंटा वॉच पार्टी का रिकॉर्ड हो गया पिछला 5 घंटे था और ये 3-4 घंटे भी चले जाएगा ऑलमोस्ट 10 घंटे हमने वॉच पार्टी करी है ब्रो फुल मेहनत चल रहा है फुल ग्राइंड चल रही है चेक करो हमारा चैनल वीपी चिकन ठीक है सैंग भाई It's the top teams in Pmgc points that may matter. Yeah. Which is क्या मतलब वीपी का मतलब इतना अच्छा है मतलब क्या So we'll have to wait बैक and see what's going on. बैक होल्डिंग क्यों संभाल लेंगे बैक से कोई पुश आएगा पक्की बात है सैंग भाई They have had an increase in pace and they have seen themselves संभाल लेगी पुश वीपी another find over towards Lux. Catch. It's the next to fall. This is a great way for RCB to continue rolling that ladder up behind them as they start to climb the tables, picking up 2 points already. Fireflux divert and fall short. Yeah, Fireflux will head over towards that northeast side. And बूट कैम्प व्हेन सून ब्रो बूट कैम्प सून Falcons coming through from यार हम इतनी अच्छी बातें कर रहे थे पता है सैंग भाई डीआरएस की हम बात कर रहे थे डीआरएस का रोस्टर #2PMGC फिर सैंग भाई ने फिर से मेहनत करी फिर से PMGC लेवल पे पहुंचाया टीम को अगेन क्या हमको #2 या #1 दिखेगी डीआरएस जल्दी से बताओ I suppose. Yeah. I do need to address this because it is a case of पोजीशनिंग अच्छा है अगर होल्ड भी नहीं होता तो ना जाए PMGC अच्छा essentially is how this is working. ब्रो थोड़ा देख के यार Because you simply wouldn't have had the PMGC points to do it. अब की बार डीआरएस सरकार ठीक है भाई ठीक है क्या ड्रॉप ले रहे हो आजकल सैंग भाई वीपी को तोड़ क्यों रहे हो क्या ड्रॉप ले रहे हो बीटी करने वाली है क्या No, that's okay. रोटेशंस में I'm trying to address it. खेलना आपको भी थोड़ा एज से ही है खेलना उनको भी थोड़ा एज से ही है फिर घुसना अंदर है थोड़ा थोड़ा I'm just going to assume that what we've been saying is right, and then we'll figure it out during बीटी देगी क्या as things are still unfolding here. Falcons, Trovo 2030 on this northern side. ठीक है अगली बार देख लेंगे कोई नहीं पैनकेक डबल हाउस ठीक है हेल रोड ठीक है हेल रोड पे गया
Salom trying to hold behind the vehicle, can't keep his teammate alive. Marcelo falls next, and Falcons एडवांटेज तो है वीपी के पास, बट आगे एरिया किल्स के लिए हंट कर सकती है. We apologize. DRS the real snake. Bro, DRS का तुम जानते नहीं हो. The flabbergasted that there's some GG 20 Pro. So you could win one for free. You could win one. Someone gets rolled down on his RCB, rocks up. Drop देख लूँगा, कोई मसला नहीं. To move into this fight, to hear this unfolding. Zeus has a similar idea. डर नहीं है, बोले PMGC चलेंगे भाई, वही सीन है. ड्रॉप तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बढ़िया. सैंग भाई जल्दी से बताओ, जो भी टीम अभी तक क्वालिफाई हुई है, अकॉर्डिंग टू यू, आप तो देख ही रहे होंगे रीजन से, तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट टीम आपको कौन सी लगती है अभी के टाइम पे जो अच्छा खेल रही है, सेंट्रल साउथ एशिया से भी एंड ओवरऑल ग्लोबल? पहले सेंट्रल साउथ एशिया का बताना. A lot of different squads right now, as Heroic will find at least one. I just want to know. They hold their ground. Molotovs them in, keeps them penned through. Will the fire spread that far? I don't think so. I think it went just a little bit over. In the meantime, Heroic having the roll up on the flank. On the offside, Na'Vi want to chime in on the southeast side. Team Spirit try to hold on with two. And on every angle, they're taking fights. Twisted Minds look to try and poke combination as well from this east side. It's really starting to heat up here, even into stage 4. And Nate at the top floor. TSK हर बंदे के पास पंप है. Seems like he's got bomb-proof armor on today. Will not fall to the first, but maybe the second, as Walsh looks to post it. लेकिन आज टीजीवी भी अच्छा खेला. आज नहीं, टीजीवी ओवरऑल कंसिस्टेंट खेला. वही चीज है ना, जो टीम कंसिस्टेंट खेलती है वो नजर में नहीं आती जल्दी से, वो बात रहती है. बट वो फाड़ देती है ना जब एक बारी में, जब दिखने पॉइंट्स टेबल पे आती है कि हाँ टॉप आ रही है, तब दिखती है वो. उसका गेम प्ले देखने का मन करता है. ज़्यूस के साथ भी पीएमजीसी सीजन 0 में सेम हुआ था. कंसिस्टेंट खेली एंड पे नजर पे आई भाई, ज़्यूस भी जीत सकती है वाला सीन रहता है. सेम गोज टू टीजीवी भाई. बट टीएनबा ने आज हगा है यार. सैंग भाई कितना हक सकती है. बहुत पैनिक में खेले, प्रेशर लेके, जोन के बाहर से घूम के रोटेशंस, वहीं फंस गए. कोई प्रॉपर फाइट नहीं हुई. नाइस नेट. This is Twisted Mind's chance to have an impact, to jump up towards the top of the tables, and this is how you do it. First, take down Team Spirit. Next, accelerate into this game. They can pick up their pace. They've got 3 eliminations now on the board. All 4 of their players alive. A very solid chance in here. An over angle from El Hadji there, as he's flexing out for power. A long split on them. 77, they're taking a heavy punishment at the hands of Zeus. 77. सैंग भाई ने प्रेडिक्शन दी है वीपी की, देखो क्या होता है. Goes in to finish off. हमारा याद आ गया, मेरे को देख के रहे. Eyes on. As the angle. ट्विस्टेड चिकन सैंग भाई ने वीपी बोला है. लेट्स सी. 11 टीम बच्चे, अभी थोड़ा जल्दी रहेगा बोलना, अभी होने दो मैच. Stage 5 now. Shortly at least. Power towards the center of things. Most of our teams down towards the bottom side of the lobby have gone out rather early here though, John. RCB though continue on their streak upwards. Galaxy as well, doing a lot of work over towards Zeus, who has started to wane in the latter half of the day. A force to be reckoned with over the course of these finals, but they have not been able to keep up the pace now. 2 matches left to go for them as they are eliminated from this one. On the south side of the circle, it looks like Na'Vi are trying to create opportunity for themselves with the 2 players they've got remaining. Virtus Pro with 4, I feel like have one of the better spots, but Power as well. Very central on this. Enigma Galaxy. मैं वेन्यू पे हूँ वीपी चिकन. ओके भाई. Fell off a little bit, but not too much. Still 122 points with 2 elims in the bag already. अयोगी A7 बेस्ट है यार, क्या कंसिस्टेंट खेलती है यार इतने सालों में. हाँ ब्रो. This is a They are team good. that needs to try very hard though. At least if what we think is true about qualifications, they need to be towards the top. नेक्स्ट कौन सा टूर्नामेंट सोल का टारगेट है भाई? जो भी आने वाला टूर्नामेंट रहेगा वो सोल का टारगेट होगा. सैंग कौन है कि भाई? डीआरएस के करता धरता, डीआरएस के कोच, एनालिस्ट, मैनेजर, सब. मेन गाय, द मेन माइंड बिहाइंड डीआरएस. It's an interesting one. सैंग, मिस्टर सैंग. RCB rolling across, getting their approach to IWNRX. It's their major move that they need to make.
the spray down from Kain can't connect, then they've allowed them in. बूट कैंप ब्रो कल परसों चौथ जब भी बूट कैंप जाऊंगा एक सरप्राइज स्ट्रीम मैंने सोच रखी है कुछ चीजें मैं बताता हूँ ये अभी होने दो चीजें बूट कैंप जाके मैंने क्या सोच रखा है लव फ्रॉम ढोलकपुर अरे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई They're getting rebuffed here. 3 players alive. They found the knock and they want to try and convert. They want to try and capitalize. They regroup. They move back in. The backline needs to get picked up. And RCB may be getting peppered down, but again, they're allowed to cross the open ground unchallenged. Again, this is something that RCB is very good at, which is scrapping in the front lines. And the guy that does that the most certainly is Loxy, but his teammate is fading around him in this moment with a backstab from Enigma Galaxy. They careen on in from the western side, and who's this? Come to party. Twisted Minds want a piece of the action. In they go. In their pursuit of ascension to that first place spot to be champions here at Emea. They go for the fight, and the nades will lead in for them. Enigma Galaxy may just clash with them over the heads of RCB, but RCB ducked out of this. And now, the teams, what once was, lays in ruins between them. And a disengage from either side. That is cruel. That is very, very cruel. Over towards the northwest, it's Enigma Galaxy. Snoix, Redux, and Ralph and Narvalo. All on their shot to get further up the top side. I believe we do have confirmation that what we were going by was correct. So Good decision. The top 6 teams from finals, excluding चैट किसी को LGD है ब्रो वो qualifying through the LGD winner of Pmgc points. Team LGD from PL. Team Spirit, and then 3 from the respective regions of Turkey, Emea, as well as Europe. What's the reason behind the downfall of Chinese team in PMGC? यार गेम एडेप्टेशन है यार ब्रो सिंपल एज दैट पेस को पकड़ना गेम का ग्लोबल वर्जन एंड पीएल वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है पीएल वर्जन पे फॉर्मेशंस रूल फॉर्मेट उनके डिफरेंट थे बिल्कुल वो हम अभी अप्लाई करे उन्होंने डबल पॉइंट सिस्टम उनका फाइटिंग पेस ही डिफरेंट था स्टार्टिंग सारी फाइट्स हो जाती थी उनकी एंड सर्कल्स पे उन्होंने इतना रश देखा ही नहीं होगा Right now you can consider everyone from first through to प्लस जब आईफोन में खेला है पीएल मतलब टीम्स ने अच्छा खेला है बट जैसे जैसे स्पॉन्सर डिवाइसेस आए वो चीज़ें थोड़ा सा हिट करी है क्योंकि उनका गेम काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है यार उनको आदत है ऑप्टिमाइज गेम खेलने का ग्लोबल इतना ऑप्टिमाइज नहीं है तो उनको इतना टाइम भी नहीं रहता पीएमजीसी खत्म हुआ उसके बाद ही डायरेक्टली पीएमजीसी जाके कितने जल्दी वो सेटल होंगे मेन थिंग तो यही लगता है मुझे बाकी ग्लोबल टीम्स अपने ही वर्जन पे खेल रही है ग्लोबल वर्जन पे काफ़ी लंबे टाइम से फेमिलियर है टीम्स के साथ बैटल भी करती रहती है एक दूसरे का पता भी है चाइनीज टीम का थोड़ा कम ये था बट धीरे धीरे दे आर बकलिंग अप एसटी ने बहुत इंप्रेस किया था बट उनका रोस्टर ही अब डिसबैंड हो गया बाकी मुझे नहीं पता क्या सीन होगा of this tournament as well, Blank, and their maturation has been something to behold. We've seen them adapt because all 4 of them coming into this one were high fragging. शॉटगन मेटा यस ब्रो शॉटगन मेटा है टीवीएस की जगह एस्ट्रोल के ने ले लिया लोग पंप दे यूज कर रहे हैं टीएस सारी पंप चल रही थी सारे लॉन्डो के पास मेरे को पंप ज्यादा अच्छी लगती है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छी no doubt in my mind that we're seeing them at PMGC, but the question for me is how will they take on the world lobby? Because it's not going to be just as easy as turning up to a finals and doing well over 3 days. You're going to have to be pretty tight all the way through on the gameplay, on the mechanics. 2021 में भी आईफोन ही था ना ब्रो दोनों सीजन जीती है जुनोवा उसमें आईफोन यूज थे बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ ये बाकी कुछ भी इंटरनली रीजन वी डोंट नो into these games. It looked very bad for them. I think they were 15th place at the start of the day, maybe 14th. नावी ने जान खा रखी है बे ट्विस्टेड माइंड्स की कूप आईजिलिंग कर रहा है ना Real change of tune and that's what pressure will do to you. As Jason Kaplan likes to say, pressure makes अरे ये नॉक नहीं लेना था That's what they're looking for. And flip with a diamond shot over towards Doran. स्मोक कर दो भाई Not a scratch on it.
looking for the spray down, but can't quite connect the VP eliminate test 2G, बहुत बढ़िया. I think Sangbai की prediction ना सही होने वाली है. Like the diamond dogs that they are. Boot camp पे हो? नहीं bro. Not really benefiting. Dory Nigel है, ठीक है. Pro, Nick Galaxy as well as Power will have to conclude this Northwest engagement. At some भाई क्या करा बे Twisted Minds तुमने? From Na'Vi. And forced to come back for him. This is awkward for Twisted Minds, in fact. Yeah, they should be able to get this res here. They've backed Na'Vi off. Utilizing some of these nades. Now, the positions. Hold भी ना करे तो MC Sang really kind of 2024. Everybody's littered around the भाई तू 100 बार नॉक हो जा यार. भाई तू नॉक ही हो जा, तू फिनिश हो जा भाई. और तू के ट्विस्टेड माइंड के वो लगा रहा है लास्ट मोमेंट पे. It's really not favorable. Rob's going down on the back line for Twisted Minds is really bad for them. They're going to have to NGS chicken है, देखते हैं bro. Crucial है वही वाला पार्ट जोन का. 12 बजे. From down the hill is just a two-man is pretty damn impressive. इमेजिन आपका जोन क्लोज इन होने वाला है, आपको जोन का आगे का सोचना है, आगे की चीजें करनी है. एंड उतने में आपका प्लेयर नॉक खा जाए या डैमेज खा जाए, आप पुश कर रहे हो जोन के एज पे, और उतने में ना एकदम से डैमेज खा जाए और आपका पुश डिले हो जाए. आज एसटी के साथ भी पीएल पे सेम चीज हुआ. जब वो नीचे डिप पे डाल देते 4M पे, उनको पुश करना था, वो एक बंदा उनका डैमेज खा गया, तो पुश थोड़ा सा डिले हो गया 7-8 सेकंड. पीछे से जोन आ रहा था. If Nick Galaxy turn their attention out this way, भाई कितने यूटिलिटीज लेके आए हो, बस करो. बढ़िया, एक डिस्ट्रैक्टेड, एक मार दिया. नाइस वन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. This is a huge pickup coming through for Twisted Minds, but look at the open ground they've got to cover. That is why all of our teams are sat there. NGX took the up on this edge of the circle. As Nick Galaxy tried to move in, Power take the shots out. Yeah, I respect that from Enigma Galaxy, and instantaneously rotate over towards Twisted Minds. You lose 2 players in the LGD दुल तोड़ दिया. अरे LGD जीत सकती है. सैंग भाई अगर आप देख रहे हो, प्लीज एक चीज बताना, क्या आपको लगता नहीं कि LGD का जीतना बनता था आज लास्ट मोमेंट पे? इफ यू आर वाचिंग. Twisted Minds layering the shots down towards Virtus.pro. Zone घटा. Twisted Minds at this point, they should have done enough to jump up on placements over Team Spirit, but not by much. It's still going to be neck and neck. Brute Force currently on this match, they were only able to get 1 point, so they are definitely not going to be keeping up the pace. LGD kills लेना prioritize नहीं करे. हाँ मतलब प्राइट मतलब कर सकते हैं, एक्सटेंड मतलब इंटेंट होता है ना एक थोड़ा सा. ठीक है, वो अपने पर्सपेक्टिव पे सही थे, अपने उस पे भी सही थे, बट जीतने का एक रहता है, वो ट्राई कर सकता है. एलजी उल्टा पैसिव हो गई, जबकि उन्होंने किलफिट भी पड़ी होगी, टीजेबी ने पॉइंट्स नहीं निकाले. वही पता नहीं यार, समझ नहीं आया यार वो चीज मेरे को. थोड़ा ऊपर से 3-4 पॉइंट से 3 करोड़ का लॉस भाई. Keep Virtus.pro at bay as they're forced further into अच्छा, the circle. ओके बाबे, ये तो मैं भूल ही गया था. पीएल में ऐसा सीन होता है ना, जो #1 आता है उसको डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स का मिलता है. अभी भी है कि सीन वो नहीं है, और जो नीचे की टीम्स होती है उसको लीग स्टेज में मिलता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ऐसा कुछ अभी? अब नहीं है वो सीन. ओके ओके, मुझे लगा वो सीन होगा, फिर तो यार पता नहीं, समझ नहीं आया. Which puts Enigma Galaxy distinctly on the back foot behind their tree. बट फिर समझ नहीं आया एलजीडी ने ऐसा क्यों किया. वो बनता था सेंस. चलो कोई ना. सैंग भाई यार प्रेडिक्शन तो है. वीपी this loot crate in front of them they can play off the back of. Molotovs go out, smart placement from Virtus.pro. So that's probably the most dangerous spot for them to be. And that smoke actually allows Coops to get up. And Bishke does not peek. That's really nasty. Coops laying down on the floor and sat down by Bishke. Gets really bold, was daring him to peek, and challenge accepted there.
Can he move in for the flush? Because the rest of Virtus Pro were taking a hiding from Imagine Navallo. करो There's ये that crate that you were talking off about. angle He's वाला covered off from ये Beachcave, knock खा but the जाए rest अभी. of Virtus Pro gonna really मजा आ struggle to जाएगा move यार, in. मजा सा आ That जाएगा. flush over onto Navallo, or sorry, मजा सा आ जाएगा. spots, making them safe, but Redox is there, and the re-knock as well. A spray down to मजा सा आ जाएगा भाई. Icy's down, and Twisted Minds pairing off with Enigma Galaxy up the hill But to फिर भी take out nice Virtus Pro. played But भाई. there's only one knock seen in. 2 knocks now, and Koa moves forwards with Icy to come on through. Lord trying to dash across, hits the tech just in time, but steps back up into the spray. Anti. But Virtus Pro keep it together. Enigma Galaxy, Twisted Minds, not enough. Oh guys, 647 लोग देख रहे हैं stream को भी. If you are new to the stream, make sure to hit the like and subscribe to the channel. सारे लोग like and रात के भाई 1 बजे 700 लोग देख रहे हैं भाई. E-sports वाले बंदे हो क्या? They're out of there. Guys, like and subscribe. 12 eliminations, and it is great to see them back. We've seen them on this screen now multiple times today, and it is just about time for it. Yeah, I mean, for Virtus Pro, it has been multiple chicken dinners today, multiple good games. बहुत बढ़िया भाई. सैंग भाई, अरे सैंग भाई, कभी-कभी लगता है अपन ही भगवान है. सैंग भाई, ये भी बता दो DRS PMGC जीत रही है कि नहीं जीत रही फिर? कमेंट के अंदर क्या इंग्लिश बनेगा भाई. मेरे जितना प्रेडिक्शन नहीं दे सकता. आप जो ठीक है भाई, ठीक है सैंग भाई. गॉड. बट ये भी बता दो DRS फिर PMGC जीत रही है कि नहीं जीत रही? डिस्कॉर्ड वॉच पार्टीज. हाँ, मैंने एक चीज सोची है कि मतलब एक शूट करेंगे अभी प्लेयर्स के साथ कुछ एक्सक्लूसिव, तो वो आपको बताएंगे टाइम आने के साथ. बोल तो दिया ना सबकी इस बार DRS सरकार. मजा आएगा, देखते हैं. और इस बार सैंग भाई मैं वॉच पार्टी भी कर रहा हूँ, सो इज्जत रख लेना, थोड़ी सी लाज रख लेना. I'll do the PMGC वॉच पार्टी. शायद मैंने PMGC वॉच पार्टी जब किया है उस टाइम पे DRS ने अच्छा खेला है. शायद मैंने जिस टाइम वॉच पार्टी किया था आपकी टीम ने अच्छा खेला था ना, वही सीजन था ना. हाँ सैंग भाई, वही सीजन था जब मैंने वॉच पार्टी किया था और आप #2 आए थे प्रॉपर. आई थिंक यूनिवर्स इज गिविंग अस अ सिग्नल. सेम थिंग फिर से होने वाली है. It is. There's been so much chopping and changing here in this final day. Teams have really तू निकल जा, मैं करता है एनालिस्ट. ठीक है भाई, ठीक है. सैंग भाई सोल के लिए अप्लाई डालो. Hiding strategies for the longest time in league stage, right? Because this is just a completely different lobby, basically, at this stage. And it's very rare that I will sort of not necessarily like accept that teams like to hide strategies, but it seems like it's fairly evident here that teams have been. ठीक है भाई, ठीक है. Now coming home to roost, so we'll see if they've got anything more for us in these last 2 matches as we take a look. XG उसमें था यार. GG में, but वो disband हो गई है. Virtus Pro, very nicely done. Similar round for Twisted Minds as well as Enigma Galaxy. Just short step down for each of these teams. RC Bra get themselves 6 eliminations, 1,302 points. It hasn't been as insane as Virtus Pro's turn of events. Are you saying ये है they have showed up कर लो तुम लोग. And here is the match report with Koa getting 894. हाँ करते हैं ब्रो. ग्लोबल सीन देखते हैं, मैचेस वगैरह देखते हैं. सब जो अच्छा खेलते हैं उसकी वीडियोस को फॉलो करते हैं अपने प्लेयर्स. In and out of this lobby. Coming up next is Miramar. And that will be an interesting. जो अच्छा खेलते हैं, इवन जो कंटेंट डालता है. ग्लोबल में बहुत कम बंदे कंटेंट डालते हैं. DRS को ही देख लो, कोई वीडियो ही नहीं डालता. मैं 5 दफा PMGC ले गया DRS को. अब ऐसे 12 का कल्याण कर देता हूँ. PMGC में स्लॉट तो दिलवाओ पहले, फिर बात करते हैं आगे की. इंडियन टीम को स्लॉट. Galaxy up into 3rd, tied with Zeus, and of course that chicken dinner tiebreaker coming through for them in that tiebreak. Brute Force down in 5th now. Yeah, I think the biggest one here. देखिए भाई, अपनी टीम कहाँ ले अरे कहीं नहीं कर रही ब्रो. बेस्ट है अपनी टीम, टेंशन मत लो. PL में कौन जीता? PL में TJ भी जीत गया यार भाई. Who has been able to pick up that spot, and currently it is
भाई क्या मेल आया, कॉपीराइट तो नहीं आ गया? बैन दी Navi. Yeah, it would be Navi. Already qualified. Yeah. मुझे लगा कॉपीराइट आ गया गाइस। 88 points for Fireflux, and again, it does really feel like there's a big difference between. बट इसका तो हमने परमिशन ले रखा है, And the top 10 right वाइट now. लिस्ट करवाया तो है चैनल यार, for बट स्ट्राइक ना आ Fireflux. जाए। It just drops down. For Power, I think it's one of the few teams down है here. कि भाई maybe them जब आप and घर से Rogue जब would स्ट्रीम like करते हो to पुराना see वाला them वाइब jump आता है, off the बस table. ब्रो पुरानी वाइब वही तो हम आज वो कर रहे हैं, वाइब को दोबारा से जगा रहे हैं। मेन इशू फॉर इंडिया इन ग्लोबल इज क्राफ्ट एंड नॉट इंडिया गवर्नमेंट। as well, because you are definitely going to want to pay attention to this, because we've Okay, got Sang bhai. exciting milestone activities for all viewers during the Pmsl Emea Grand Finals, powered by I never understood why Infinix. Apollo Keep Vixi watching वाली the stream team closely, because we're NGX और unlocking ये लोग 5 की tiers हैं of बात। prizes भाई हिरेन for भाई, dedicated fans. भाई The longer you आई stay थिंक वो tuned, रोस्टर the स्टिक better your करता तो chances बहुत are to win. अच्छा So each कंपटीशन अभी milestone दे रहा you होता और reach काफी unlocks आगे a जा रहा higher होता, tier of prize. शायद Head अगर over टूटता to नहीं। Instagram and check out हिरेन भाई क्या बात है यार, आपने Make बहुत sure that you डीप बात comment करी है, बहुत hashtag कम लोग outplay the समझेंगे, rest. बट That is यस hashtag outplay the rest, and you can be one of the lucky I ones to walk away with same one thought. of these glamorous prizes. Keep watching the stream to unlock all the great rewards powered by Infinix. Very, very well done. If we do hit 190,000, but it is Congo just for 1K prizes like for after you a long to time। compete हो for गए 1000 at लाइक, home. थैंक यू In सो the मच meantime, गाइस। we'll be अगर heading 1000 over लाइक हो towards गए तो Miramar next. बहुत बहुत An शुक्रिया। ultimate map From before we lost crown our Tencent victors of the to have finals here at BGMI PMSL team, EMEA. Tencent So is stay more happy tuned. to We'll let be back them shortly. join। See you there. ओके, ऐसा सीन है क्या सैंग भाई? मुझे नहीं पता गाइस, ऐसा सैंग भाई बोल रहा है। लेट हिम कुक, पता नहीं सैंग भाई को क्या क्या पता है, क्या क्या बोल रहे हैं। मे बी इंटरनल बंदे हैं भाई। PMGC 5 बार पहुंचा दिया टीम को, कुछ कॉन्टेक्ट्स तो होंगे, कुछ सोच के बोल रहे होंगे। अरे भाई स्किप्स कैसा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है भाई। सैंग भाई अभी बज रहे 12:37। क्लचेस देखते हैं, बट इसमें सारे यार वेस्ट के क्लचेस डाले उसने। Tony K, the 1v4 against Stalwart. Side as well. He gets low to the nades, but the MT5 goes down. Fredo looks for retribution, not going to find it. Over the top, doesn't get sat back down as well. The spray, the flush comes through, and it's 3 versus 3. It's not the best nade here ये in the मेरे को ऐसा world. क्यों लग रहा है, ये मैच शायद मैंने देखा है, शायद ये एक ऐसा मैच है जहाँ पे ST को कमबैक चाहिए था, उसके बाद ST ने कुछ कमबैक मार के फिर आई थी ऊपर, वो वाला मैच है शायद कुछ वैसा टाइप का। उसका जीती भी थी, ऐसा कुछ मैच लग रहा है मुझे, वही वाला मैच है क्या ये? कमबैक मारा था ये वाला, थर्ड डे तो नहीं है ये, डे 2 है ना, कुछ कमबैक मारा था उन्होंने हक के। Yeah, indeed. Of course, that zone, of course, has gone towards the more eastern side once more. And unfortunately, it looks like it once more. A little bit of a dip dive. Mythic. He's found 2. Can he find 3? That's the surprise factor you were looking for. And unfortunately, Team Casement's feeling like it's lights out already. And they've only just got back onto Miramar. And this feels non-daftly. That's the double knock that we were looking for. As you mentioned, Mashik does definitely do have भाई ये प्ले मेरे को बहुत प्यारा लगता है मेरे वॉल्फा 7 का, ऐसे मारता है ना भाई कई बार। तो बहुत पुराना इवेंट हो गया, अब तो काफी ग्राइंड करके बंदे ने अपने आप का लेवल अप कर दिया है। Alakada is still there, still waiting as Nice desperately hold on.
in this position. A solo also for A7. Revo, he'll find another knock. That'll be a forward. A fall. हो गया खत्म. नाइस. और क्या ऑप्शंस है हमारे पास देखने के लिए? लॉरे सॉरी. Or will it all go wrong? These two players, but Spec gives it up. Oh! Down, right on top of Becker. Can he get out of there? Can he get into the buggy and get through? He's looking for first aids, and 3 of them are found. Does he have time? Will it tick? There's no stims. It's close. It's down to the wire, but I think he just about has it. Oh, the BPM that's coming out from Stalwart is far too much to handle. Blank, they're just dropping into them. It feels like they are just falling like flies right now. They cannot strike back. Forced to go into the hill. It's the zone that makes it uncomfortable, though. That could be the one saving grace. They've got a lot more room to play with in terms of the map geometry as the zone closes in. It's all about healing through this. Can they actually survive this one? Or will it all go wrong? It seems like they've lost it in the dying moment. They actually are able to win it from underneath. But it was FaZe in the bottom spot to be able to take that chicken dinner. Is it Power's turn next? Let's have a look at that hillside under their control. Rook trying to take care of Genesis, but Influence Rage taking care of the remnants of BTR as well. 2 players go down to भाई रोटेशन मुद्दा ही नहीं है अभी यार, अब किसी और चीजों पे वर्क हो रहा है. Final member of BTR. Ridgeline, but it doesn't quite tag the full damage. Instead, it's only a little bit. Genfos puts another one forwards, tries to scare him. The nade is cooked. Little boy with the DBS gets cut down, and Genfos claims victory. Down for Nongshim to try and keep consistency, stay in the top 3 at the end of the day. Because IHC will give no quarter. Sporter for 1. Shouts pull, gets the second to peak. ये भी काफी अच्छा प्लेयर है. Only gets half his HP bar. 3 Nice. shots in the chamber. Squad. Alpha 7 a little bit split, but Misery Town first, and Carrillo always slick with it, always looks good. Luxy with the chance though, and Carrillo's good for 1, and he's on the ये देखा था मैंने. Who is this man? Bandages there, but that's about it. Neos looking for a spray onto the party bus. 1 and 2 and a third as well. Neos tears them to pieces. There's only 1 player left in the backline. Zio keeps them together. To get the backup there, and he didn't get value on the off angle. And for that, this was right at the start, right? विवेक आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज? मीटिंग है सर. आप जाओ. जाओ. फोटो जरूर खींचना. 17. There's going to be a lot of players left alive in Circle 8, given the way the circle is around the crevices of the rocks. And that means Circle 9. Oh! See a lot of people pushing from the blue, but what a nade, a double! Now, and immediately they flow on up and over. He doesn't want to give it up, but he gives his team that go signal. They're still playing with pump actions, and UMB's trying to roll on over the top here. Can hold up in, and it's not the easiest to hold, even as a 4. So we'll have to wait and see if they're able to do so. Knocks out in the water. The panic. And Oh no. How have they done that? It's just about connecting the shots. Free-fire punishment not quite landing. I8 as well, stuck into a fight versus Tiamba. The spray control's looking crazy. It's actually a Mini 14. Man's just massacred them with a Mini 14 blank. In the middle of it, yeah, he's got that point on board. Looks like there's more knocks coming on through. Is that Winchester in action that as was? well? I love it. I love to see it. A cheeky little headshot coming on through. Thank you so much, Sangbhai, for the $5 super chat. Wow. that distance? What? Adrian. मैं सैंगभाई को व्हाट्सएप कर रहा था, सैंगभाई ने यहाँ पे चैट कर दिया यार. सैंगभाई वैसे मैं मजाक कर रहा था यार. By the way, W सैंगभाई, thank you so much for the always consistent support. We'll shut him down. Rosemary's out again. It's over. It is so over. I think let's move into the match, guys. Let's some clutches देख रहे थे. Let's move into the match. सही टाइम पे आते हैं हम हमेशा. मैच स्टार्ट ही होने वाला है. Quite able to get towards the top though. They are pretty close to brute force though after that last match. And if they सैंगभाई ने सबको अपना फैन बना लिया. सैंगभाई भी लाइक यार एक YouTube चैनल खोल लो तो मुझे लग रहा है कि 1 लाख तो ऐसे हो जाएंगे. If you guys want to win an Infinix GT20 Pro, well, you don't have to go at pace.
Instead, you need to go over to esports PUBG MEU on Instagram for your shot at winning a GT20 Pro. The way you do that, well, that's by counting up the appearances of the Infinix GT20 Pro banner on the left-hand side of the screen that appears during matches and commenting how many have appeared. चैट पे क्या चल रहा है सैंग भाई? आपने चैट बहुत सीरियस कर दिया यार। which means that there could be more still to come. रात के 1 बजे चैट हमारी सीरियस बात कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज सैंग भाई। Over on Instagram, what you think your guess is. Because it could be anything. It could be anything. And anything can happen in these past next two matches. Various pros already shown us that it's never too late in these games. Down towards the bottom side of the lobby, looking to send it even higher as we head over to Miramar, heading from the western side of Malpozzo down to Porto Paraiso. You can play with the GT20 Pro and outplay the rest, just like all of our teams and players here at Pmsl Emea, using that wonderful phone to take on the rest of the lobby. चलो गाइस ठीक है ना कृषि बीजे में टोटली डिफरेंट ऐसे सैंग भाई की चैट डिलीट एवरीथिंग इज गुड इन इंडिया बट वी रियली मिस इंटरनेशनल इवेंट सून होगा ब्रो सून होगा चलो अब मैच भी एंजॉय करो सेकंड लास्ट मैच है देन इसके बाद लास्ट मैच है फिर मेरे को सोना भी है यार कल हेलो गी भाई हेलो रॉयन सिंगर रॉय व्हाट्स अप मेरी जान Haven't had one of them in ages. Yeah, Crayfield is always fun for everyone. By everyone, you mean the team on the high ground. Yeah, just kidding. One team. Where is my भाई? My भाई doesn't really have a lot of fun either because भी बूट कैंप आएंगे जब मैं बूट कैंप जाऊंगा तो we both are traveling. Mostly हम सब बूट कैंप पे होंगे एक डेट में Navi heading towards La Cobraria. चलो गाइस आई को कुछ जलन हो रही है सब मेरे से बात कर रहे हैं बोल के मैं अब चुपचाप देख रहा अरे सैंग भाई यार ठीक है भाई on that run for the first place and we get a hell of a circle up towards that northeast side towards Cruz de Valle. आइए भाई आज जाने वाले थे ना बूट कैंप ठीक है मतलब क्या होता है जोन देखो वहाँ पे जोन के आगे है कोई भी जोन के अंदर नहीं है Interesting. This is going to be quite the migration from the southwest side. A lot of teams going to need to find their way, muddle it in through the middle of the map. I wouldn't be too surprised to see quite a lot of teams opting to go for those side rotates, right? I want to win soon. I followed. जीतेंगे जीतेंगे नील भाई टेंशन क्यों ले रहा है टेंशन क्यों ले रात के 1 बजे टेंशन नहीं लेते ब्रो हम यहाँ पे स्ट्रेस फ्री करने के लिए बैठे हैं आओ बातचीत करो हमारे साथ They could move up towards Al Azhar, try and get towards Cruz de Valle even, and then play from that northeast side. क्या क्वेश्चन पूछा है किसका आंसर दिया है ये Pretty clumped up actually. Quite a few of our teams, 77 Power and Enigma Galaxy, all in a similar location. India versus Mongolia, more chances than CSA. Mongolia and China, same as India and China. You know. All of our teams will be getting into traffic jams pretty soon-ish. Soul always on top. क्या पता? Clean shot out towards that eastern side. क्या पता? If we take a look at our current point standings. Unju Sunil Whitey, hi, hello bro, what's up? क्या हाल चाल? All good? बढ़िया. Realistically, over these last two matches, they are sort of the only two teams battling out for this first place position. Unless something crazy happens between Zeus Esports, Enigma Galaxy, or Brute Force, but only one of those teams could send towards the top side. We'll have to have 2 fantastic games twice in a row, so it makes it even more unlikely. You've got 77 there as well, on 131. Exactly. सैंग भाई आपने पूरी चैट में ना जो आज सारी बात करी है ये सबसे सही बात करी है जो आपने भी लास्ट मैसेज किया वैसे सैंग भाई आपने अपनी फेवरेट टीम्स नहीं बताई करंटली सीएसए एंड ग्लोबल पे इधर उधर की बातें कर रहे हो बट एक जो अच्छा क्वेश्चन पूछा है वो नहीं बता रहे हो इतना देख रहे हो ग्लोबल का क्या फायदा हम तो 1 साल से नहीं देख रहे 1.5-2 साल से आप देख रहे हो तो बताओ ना यार आप गलत कब होते हो आप गलत पता कब होते हो रहने दो बाद में बताऊंगा ये अभी लाइव पे नहीं बता सकता कब आप गलत होते हो which could play in their favor if they're able to win out those fights frequently and successfully. They can add up a lot of elimination points. RCB nice and central over towards water treatment. It is Twisted Minds with the better favorite teams DRS. Oh my god.
Oh my god. Getting far into the ठीक है circle भाई. towards water treatment pretty quickly as well, John. I think that honestly at this point though we have Nova release whole roster after this year and they purchase all new players. Bro ठीक है. चीजें ट्राई करी उन्होंने काफी हद तक. प्लेयर्स को एक्सप्लोर करना था बाहर, तो वो कर रहे हैं अभी एक्सप्लोर. बट नोवा के प्लेयर्स की भी शायद कुछ क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशन है ब्रांडिंग वगैरह को लेके प्लेयर्स का. मैंने किसी से सुना था. ओ गिर जा. Kicking up the dust, trying to किस्मत भाई, किस्मत लेके आया था रॉब. to the wall. Twisted Minds at a pivotal juncture. That bar on the right-hand side, no, that's not gone. It's just Robs. He's super low right now. And immediately... जीडी भाई रोनी की टीम से आके आप मेरे को यही चीज यहाँ पे बोल रहे हो. शर्म है आपको कुछ? Goodness me. Nerve-wracking for Twisted Minds. If you lose Robs out in the open, he's done for. You're playing as 3. And I mean, for Robs, he has actually been quite a contender for Twisted Minds throughout the entirety of this tournament, as is usual. Losing him would have been really bad. Luckily, he's able to get away. Very pivotal moment here in our Miramar. भैया बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? ये नहीं नहीं भाई, इंटरेस्टिंग है, काफी फास्ट है. गुड. Falcons. अच्छा है. मैंने फर्स्ट ही देखा अभी. गुड. Unlikely. It's so sad as well, considering their improvement over the league stage. Unable now to make it here. Order wants Suk as usual. कर दे क्या पता, मैनेजमेंट देखते हैं. पैसा तो है उनके पास लगाने के लिए. बहुत पैसा कमाया है नोवा ने. पूरे ग्लोबल पे सबसे ज्यादा पैसा नोवा ने कमाया होगा. 2 PMGC लेके जाना, अपने PLs को जीतना हो, तो डाउनफॉल अब स्टार्ट हुआ है उनका. स्पॉन्सर जितने उनके पास, ले लेंगे भाई सुक को. A very, very difficult approach for them, and अभी तक इतना खास तो नहीं है, ठीक ठाक ही है. मतलब ये में जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही है. Plenty of possibilities for them as they make their way to the east side of the Lavandita crater, moving in behind power right now and going in for the east side of this circle. S2G over to RCB, who have been on a bit of a tear today, but Pmsl going down, who has been one of their most effective players over the last 5 matches. Blank goes down early. Real bad pickup there for RCB. As well as Loxy falling, another pivotal player for RCB. Incredibly rough. अगी भाई क्या अपने को बट डरते हैं क्या यार? कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो आप, छोड़ो. जैसा है जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है. आप हमारे पे छोड़ दो ना. माई भाई है, मैं हूँ, टेंशन मत लो. टीम है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप चिल करो और रात के 1 बजे चाय पियो. 10 teams out of 16 qualifying. I thought it was going to go Pmgc back are not into that Pmgc peak, anymore, but no too bold. Didn't really like it, but he thought better of it. Nicely found. Silas still taking damage across the साहिल भाई थोड़ा याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद दिलाओ. Team Spirit making that rotate. There has been a good comeback from Team Spirit over these last 2 days. I'm very pleased to see it. जरूर जरूर सूरज भाई, for sure. कोशिश वही रहेगी. It's been a while since we've seen a dominant Team Spirit, with some unfortunate moments throughout the year, honestly. नील प्रजापति इंडिया के सैंग भाई, मिस्टर ग्लोबल. I think इसका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे अभी के टाइम पे. They're a very strong team, and yeah, horrible shift over towards Hacienda del Patron, and all the teams went over towards that eastern side. It's only Brute Force with a good position here. Oh, and they love these splits, Blank, on the north side of the circle. This is their playground right now. I will come. Wait a minute, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. मैं पानी लेने जा रहा हूँ. तब तक चैट बाहर संभालना हमारा. Look at a little bit dodgy. Trying to get away from it. Only Matic in this buggy, and it is smoking, but he's behind the terrain, he's behind the ridgeline. He's got a करता हूँ टॉक शो भी. आप पहले उसका आंसर दे दो एक का प्लीज. From this east side is so difficult. They tried to evade the first move up to the northeast by making it out to the east side, but now they're in and amongst the piranhas, all wanting a nibble.
as everybody's गाइस moving वैसे west at the same आइडिया time. अच्छा है. Let's do a live talk show with Mr. Sang. Nice and central though. करते Quick हैं rotation from पक्का them. कंफर्म. ये Pro वीडियो qualified फिर 1 मेरे point from चैनल पे S2G, आएगी and मेन their वाले run पे. is looking worse and worse. डनसिन करते हैं, इसका प्लान करते हैं पक्का. RV didn't have to go too far, but they will have to play on that northern side. It's not always the easiest of rotations from that position. And Virtus Pro, honestly, they made the right rotate from where they were on the map. इसका आंसर यार ये है क्वेश्चन. Heading over towards that eastern road, but that does find them now in El Azahar, one of the furthest teams from the circle. Currently, what is the difference between global teams and Indian teams for this year? I'm trying to do some adding up right now, Blank. 2 eliminations for Heroic, 1 elimination for S2G. Is RCB's player? He's down. Oh no, Heroic. Okay, I thought a Heroic player was down, but they did manage. They were just very, very low on HP there. I thought there were 4 players gone, but my eyes betrayed me there. Didn't quite spot that one. So it does all add up. It's squared away again. The numbers, they never lie. Speaking to you there. Yeah, a little bit. Navi, they get in. Again, not a bad position to be in. They do have the high ground over on that northern side, looking down towards Brute Force. As we're pushing in over towards stage 3 now. Virtus Pro, because so many teams cleared that space from the eastern side, immediately to head over towards the west. Their angle is clear, as you can see on the map right now. Team Spirit opting for an unorthodox route, though. Head over towards Torre Armada. They were directly on that south side, so they have made a strong movement. The question is, does IW NRX see this one coming? They might hear the vehicle. भाई फेस कैम के साथ करो ना. करते करते भाई करते. सैंग भाई मैं सेम चीज ही बोला था. हमारी टीम ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम्स आपको लगता है कि ये है वो है. बस थोड़ा सा जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे एक एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर मिलेगा. We'll grow, we'll learn. यही चीजें मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी कि माइंडसेट नीड टू बी हाई एंड कर लेंगे भाई एक टाइम पे आके. फैल्कन का डाउनफॉल का तो अच्छे से बता पाएंगे सैंग भाई एक एक चीज. फैल्कन इज फेवरेट टीम ऑफ टीम डीआरएस. एंड किसी ने एक ड्रॉप क्लैश का पूछा था मिल्टा पे टीएन बाय डीआरएस का. तो एज फार एज आई नो कि स्क्रिम्स पे आई गेस वो चीज सॉर्ट हो जाएगी. ग्लोबल में पता क्या होता है स्क्रिम्स के अंदर, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है. आज से कुछ टाइम पहले ऐसा होता था, स्क्रिम्स पे टीम डिसाइड करती थी कि हम स्क्रिम्स खेलेंगे, विल टेक द फाइट, बेस्ट ऑफ 3 होगा, जो 3 में से 2 बार जीत गया उसका ड्रॉप, जो हार गए चुपचाप से चल जाओ, कोई और ड्रॉप ढूंढ लो. Oh my goodness, straight up the cliff face and flip is out. Na'Vi अब पता नहीं वो चीज है कि नहीं एग्जिस्ट करती है. Team Spirit lose a player, and I said they didn't want to go down piecemeal, but they didn't really have a choice there. You can see Na'Vi across the way, gonna leave their high ground. And one more thing, teams also make mistakes. एक प्लेयर अच्छा खेल गया तो उसको ग्लोरीफाई ज्यादा. Really good for them. Na'Vi gonna descend potentially into the waiting arms of Nick Galaxy, who are just further across the way. But Nick Galaxy, they take up this mantle. Oh, they do. Towards this western edge. 134 points, like we said, need a couple of really big matches here to have a shot towards the Guys, you want a podcast with Sang Bhai, so I can do that यार. मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपको Sang Bhai से बात करना, so I can do a podcast. If you are interested, yes टाइप कर दो एक बार. मैच तो मैं देख ही नहीं पा रहा. Sang Bhai की बातें ज़्यादा मैच पे ध्यान कम है वैसे अभी. डर ये है कि सैंग भाई क्या लिख दे अभी. That middle position, that middle compound for Brute Force has oversight towards the north side. A lot of open ground around it, difficult to approach. Nice name from Effect, actually. Send over the top. Well, at least give them the information of a target. Matic went for a long outside scout, see anything he could see. Was a long shot, but it works out. Heads on back. इतनी रात में लाइव ब्रो, अपना अलग सीन चलता है, हम अलग चलते हुए. What to do next?
this compound right on the यार other side. अभी Nick वो Galaxy has चीज़ eyes पॉसिबल on it, नहीं है, but अगली बार को मैं equally, कर Nick सकता हूँ Galaxy स्ट्रीम will पे वो want to चीज़ move in पॉसिबल, as we अभी head कुछ वो towards चीज़ stage पॉसिबल नहीं 4. होगी जो आप बोल रहे हो. Next circle. How harsh is it going to be to us? Head southwest, and again, position for brute force really, really strong here. But the team's going to be moving across the road, can lay up towards that ridge line just to their north edge. Could be troublesome for them. Power, heroic, clashing on the east side. They are on the long side of the circle, so they need to get this one done and dusted soon as possible. Jafar takes that to heart. Will go for one, turns his attention uphill, but Power hopping in, hopping out of the vehicles. Want to turn this one back around. Get this one cleaned up. In the meantime, RCB cleaning up over towards their side of things, over on the south side. Nades pouring back and forth. Team Spirit and Na'Vi under pressure from so many other teams. Yeah, it's very, very tough for most of our squads on that northwest side of the map because there's not a lot of strong angles that you can make your way in on from. Power's out. Heroic will dispatch them. Smokes go down from Heroic as they know they've still got a while to go. Enigma Galaxy taking a little split as Ralph sends down towards that south side. As this is a hard shift down towards the southeast, so we will have a slow circle over towards that west and directly south side of this circle itself. Team Spirit moving up to the hillside. I mean, there's the compound that sits up ahead of them that is now completely vacated. Na'Vi out, and they rock up. Nobody to stop them. A really strong position. Makes you wonder what happened to Na'Vi. टीम की क्या लगेगी भाई? बढ़िया बढ़िया, टीम से भी मिलेंगे यार, अभी बहुत जल्दी टीम से भी मिल रहे हैं. Really loving your hard work, क्योंकि भाई appreciate it. Thank you so much. अमन पांडे, आज भाई हमने 10 घंटा वॉच पार्टी करी है. 10 घंटा वॉच पार्टी ब्रो. I am 53K lucky subscriber. अरे दर्शन भाई, thank you so much. Teams would be coming in from that location. Their split was just a little bit too wide. Brute Force though have not had to do too much at all. Can just sit still. Play this game out. ये हिटमैन गेमिंग गई सैंग भाई, आपकी दूसरी आईडी तो नहीं है? Take the fight to Brute Force will have to go for a crash. भाई कैसे दक्ष भाई, एकदम बढ़िया यार. Guns that are still on the map. It's not an ideal time to go for it. Nades from Virtus Pro to try and soften up IWNRX, but there is a response. And the health bar's looking a lot worse for Virtus Pro right now. Trovo 2030 going to suppress this ridgeline, help keep them safe for a little bit, but it's not going to work out because Frozen is there. Marcelo can't quite push them back in time for Virtus Pro to be able to get across. Great. A spray down from Swain is huge to be able to pick one out. May have gotten a second if he concentrated on the vehicle. It was not to be. That one spins out and instead catches the player in the dirt later on. IWNRX on the north side of the circle. Hard rotating for them. Come down towards the वैन का भाई वो चीजें अब मैं क्या बताऊं, आप छोड़ो वो चीजें है, वो चीजें देखो भाई. गुड नाइट नील प्रजापति, कहाँ जा रहे हो? शर्म करो यार थोड़ा सा, इतना देख लिया है तो एक मैच वेट नहीं कर सकते. चैंपियन देखो कौन बन के जा रहा है. ट्विस्टेड माइंड टॉप पे बैठी है, टीएस टक्कर दे रही है. इन दोनों में से कोई चैंपियन बनेगा क्या पता. ज्यूस निकाल दे ब्रो यार, ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो यार इवेंट को. यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द इवेंट, दैट इज टू रॉन्ग. देखो भाई कैसे हो? बढ़िया ऋषभ तिवारी भाई, एकदम बढ़िया. सैंग भाई सो गए शायद. Let's take a look at that compound a little bit. Sure, it would be great to be in there, but there is also the ridgeline to the southwest of it, Blank. It's really quite dramatic as a ridgeline. Right now, nobody can realistically take it because of Enigma Galaxy's position. I think that इधर ही हो देखो सैंग भाई, इधर आपकी चर्चाएं हो रही है, चैट पे आइए आप. Spirit first, transition to that ridgeline to the southwest. Maybe you push into the compound, maybe you allow everyone else on the east side to fight over it. Remains to be seen because the rest of the circle has really got the scraps to play with right now. This north side, hair-raising for IWNRX, for Trovo 2030 as well. नहीं आप नहीं सो रहे, मतलब एक हमारा सब्सक्राइबर सोने जा रहा था, उसको हमने रोका है. भाई मैच देखो यार. The Team Spirit are just over the way. IWNRX take down Trovo 2030 handedly. Do you take a couple of knocks though, or at least a lot of damage? They can get back up
in quick time. Team Spirit will need to have some kind of effect on this, which they do, finding a shot over towards Pmgc. Furia, though, wide wrap from him. From the compound. Okay, all right. Brute force. Looking for the shots, looking for the ascension here, looking for more eliminations. Put them in the basket, take them to the checkout. आरसीबी तो इसमें भी नहीं जीतेगी। अरे आरसीबी यार नाम वैसे ना मेरी फेवरेट टीम है आरसीबी, बट कई बार लगता है आरसीबी। ओह नाइस वन, Going on in Magnum. मार Last देगा। stand, Hope down the stairs and steps right into the barrel. Not going to matter. Fancy feet. Back on in. Falcons, can they get both of these reses? Because no one's pushing just yet. टैंग भाई यस यार ये चीज तो है। आई थिंक आपको व्लॉग ट्राई करना चाहिए। आई थिंक यू शुड ट्राई द व्लॉग्स। DRS का भी आपको बैकएंड का स्टोरी दिखाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें आपको बनानी चाहिए सोशली। यू विल बी सेइंग फ्रॉम DRS, डोंट नो अबाउट रेस्ट फोर। आई थिंक सेंग भाई आपको डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज एंड बिहाइंड BTS। एक कैमरामैन ले जाओ, डॉक्यूमेंट्री अच्छी बन सकती है। आई थिंक अच्छा पुश मिलेगा उससे भी कंटेंट वाइज। यू आर गोइंग PMGC ब्रो। Discipline now, more important than ever. Coops lands a nade. Freezer will go down. Coops could get a little bit too bold here, so we'll see if Brute Force are able to read into this. Maybe try and move back around this headland. It will be a good idea. It's a very difficult peak to go for. The shots, the nade, and that's stolen away. Team Spirit take that point. Oh, that's nasty. That's good. बिलीवर भाई कर तो रहे हैं, धीरे-धीरे कर तो रहे हैं। The 3 eliminations total, but Twisted Minds is not falling behind in that category either. भी आपने देखा होगा रिसेंटली कर रहे हैं सारे, मतलब एफर्ट्स आ रहे हैं सबकी तरफ से, धीरे-धीरे होगा, टेंशन मत लो, चीजें हो रही है। Brute Force now go down to 3, losing Freezer is a big deal, but eventually they're going to have to peek over this ridge side. इस बार CS से डोमिनेशन बनता भी है यार, अच्छी टीम्स हैं। आई थिंक ये CS से डोमिनेशन बनता है इस बार। Towards default from Na'Vi. He's 18 players right now. It's crazy what he's able to do. What a threatening presence he must have to stop all of these teams from going in. Goodness me. Expect as soon as the fight on the northeast concludes, or this fight with Falcons and Fireflux to conclude, for someone to send into this one. I like Pmgc's transition over on that west side. That's what I said I wanted to see from them, moving in to take more control over the west side of that dramatic ridge line on the south of that default compound. Ali cooking nades. No one finding each other on this southeast side engagement, Blank. Yeah, I think for Pmgc, this is what's stopping Team Spirit from making that move, but they will have to at some point. नील भाई Brute Force are distracted. अच्छा लग रहा है ब्रो, फिट भाई के साथ काम करके मजा आता है भाई। Not enough. And Neos is found as well, going down. That's Brute Force on. फिट भाई साथ रहते तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ब्रो। But Lord is right there. They can go for this res in the longhouse. Pre-pod spotted. And Twisted Minds taking this back in their favor. The res can still come through. Furia spotted. There is the third-party presence as well. And out he goes. Furia, the survivor for Brute Force so far today. Looks like he's going to have to do it again. And RCB, though, they spot their opportunity. Over towards this fight. Furia wandering back. Has a nade in hand. Another over towards Robs. Nice little pickup. 5 nades on the hand. Coops there will spot that, but the nade goes out wide, confirms the flush. Loops. 4 nades. Sorry, Coops will not be able to find it. 4 nades now. But time क्यों दे रहे हो उसको? Drops one underneath and Lord goes down. Doran, is he next up? I think he knows where he is. Furia still has more to play with. That's a great nade. Right on top of बच गया भाई, ये भी नॉक खाता है। बहुत टाइम दे दिया बे, एक ही बंदे को इतना टाइम। 2 players to handle. RCB, they take a back foot. They slow down on their approach. That reposition is spotted. Team Spirit are down. Twisted Minds, if they can stay alive here, could solidify themselves. But there is a little nasty Furia in the side. And those nades, they burn. It has been कुछ भी खेल रही है Twisted. from Furia. I mean, having those nades available, Molotov could be huge. Heads towards the backside, might do some damage. Coops though has an angle, and he's back into cover. Oh, he's got more healing to do, but finally Lord is back up. The Molotov back in response. That's going to really slow him down. Coops wasn't ready for it. Soul always on top. Thank you so much for joining the Ayogi Army. याद रहेगा रात के 1:10 में आपने हमारी membership को join किया था. They have 6 eliminations now, Blank.
They have some room to play with. The runway is there to approach default. The only player in this heavily central compound. It's so funny that he's been able to live out here the entire time. It's incredible. यार वीकेंडी का सीन मैंने क्या बताऊं मैं आपको वीकेंडी का सीन हमारा ऐसा है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई है बेसिक्स में जिसकी वजह से वो मैच कॉस्ट हुआ है तो वही चीज है कि वो इन टर्म्स ऑफ स्टैट वाइज वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी देखने में ठीक है बट आने वाले टाइम पे उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं तो टेंशन मत लो ठीक है सैंग भाई तो आने वाले टाइम पे कर रहे हैं उन चीजों पे वर्क तो आपको दिखेंगे वो चीजें सही वरना वीकेंडी के हमारे काफी बड़े बड़े मैच हैं जो वो है थ्रो हमारी तरफ से अरे अरे मैवरिक भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द योगी आर्मी भाई ये मेंबरशिप वाले बंदे यार दिल खुश कर देते हो तुम ज्वाइन करके पता नहीं क्यों यार मुझे ना सुपर चैट से ज्यादा ना मेंबरशिप वाली चीज देखता हूँ ना मैं जब चैट पे आती है बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मेंबर एक ओ भाई ये सही था मैवरिक भाई ये हमेशा याद रहेगा 1:11 पे शगुनी समझ लो ये सही था भाई ये सही था ये मेंबरशिप लिंक तो पता नहीं यार कहाँ से देते उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा ब्रो मेंबरशिप लिंक देख लो यार गाइस कैसे निकलता है मुझे नहीं पता शुरू मैंने करा था पर काफी क्रिएटिव था बट थैंक यू सो मच सोल मॉर्टल ओजी फॉर जॉइनिंग द आर्मी मीनवाइल क्लच भी हो गया यहाँ पे ज़्यूस का ज़्यूस बापे फाइट निकालनी थी यार सीडी तुम्हारा ही था ज़्यूस चोक And RCB, the transition with their own last banda bacha will not go the way they wanted it. Silas, the last to fall. Default is still alive, Blank. In nice the middle one. of it all. He's weathering the storm. 11 I mean, Default at this rate. और टाइम वेस्ट हो गया लास्ट बंदा बचा है Enigma Galaxy have got in. Enigma का चिकन It's a case of getting their players back up again as the circle forces its way in. Enigma Galaxy look to clear. DRS versus Acid won't be a big deal, but BGM versus Pajama a big deal. Yeah, okay, bro. Okay. This ridge line was going to be powerful, but I didn't realize it'd be this powerful. Enigma Galaxy. एक मिनट रुको, 2 teams hold किया इसमें अभी solo. Over the top of the roof there. Look at the Safari. health bars on Zeus. Let me check, guys. They do have 4 players alive. Let me check. Wants to join his team in the Red Bar gang. We'll have the med kit though. They are gearing up for the crash. Enigma Galaxy. I kind of want Default to step out into the open ground and try and just play in the dirt right now. Yeah, I mean, a second place for Default would be insane. For Na'Vi, Playzone will take down Maniac as they move forward. Nade sent out. Gonna maybe found something, and he keeps sending shots through. This man is bold. See, if Default had gone out to that rock, he would be more central on the circle. This is a real tough challenge. Enigma Galaxy are on the low ground. They can't move up. They think there's more players in here. Well, they should have read into it by now that there's only a solo to deal with. And that's why they sent out this angle. They know Enigma Galaxy. Many more players on side. But they're thinking, is it 2 players for Enigma Galaxy? Is it only 2 players in here? But I think they figured out he's on the roof now. But they'll play off it. Enigma Galaxy. You got Snowix just chilling. And it will be an extended finish here as we head into Zone 9. In our final Miramar of Pmsl Emea. With Default, one of the craziest survivalist strategies we've seen in quite some time here. As I said before, I feel like I wanted him to get out into the desert and leave these 2 to fight over the compound. Because at stage 9, it closes central. That goes onto Zeus's corner, but it's so likely that you are able to get a second place off the back of something like that.
Enigma Galaxy, what they don't have is the central position. And potentially looking for something else. Snoix, undecided how he wants to play this one out. 3v4. Well, a 3v5, technically. The rotating turret on the top side of the building in default. Zeus really unconcerned with dealing with it. I mean, they know that it's such a dissuading presence for Enigma Galaxy to go for these nades and shots, but that's an excellent opener here. Default just needs to stay out of it. If Enigma Galaxy lose one, if Zeus lose one, that's what he needs to be worried about. Enigma Galaxy getting caught off on the sidelines. Maniac steps out for it. Rita is down, and they needed more of a dent put in by Enigma Galaxy over towards Zeus if Default wants to come away with this one. Spray downs, keeping them up tight to the wall. Default just keeps them in this. And it's so devilish from the top rope. Default really wants more. Zeus weathering the storm beautifully, though. They've taken so much out of Enigma Galaxy. Redox moves up for the spray down, but it's not going to work out. Default ladders up into second place, and 4 players from Zeus will try and strike him down now. I think he's just going to deny this. Up he goes. Maniac for the first peak and will be successful. What a way to close it out. Na'Vi up into second place, but Zeus, they were there for the full Monty, all the way to the top. And it's so upsetting here for a lot of other teams. भाई जियोस का चिकन आने से एक चीज तो है कि अब शायद लास्ट मैच में 3 टीमों के बीच में कंपटीशन रहेगा टू विनिंग दिस EMEA PMSL का सीन. सैंग भाई बताओ, ट्विस्टेड माइंड्स I guess कौन-कौन सी टीम थी? ट्विस्टेड ओके, Zeus and if I'm not wrong TS. इनमें से कौन जीतने वाला है? GG Zeus, yes. Zeus के लास्ट बंदे ने संभाल लिया, नहीं तो वहाँ पे GG जाता. It's very likely that they are in with one of those qualification spots. It's really great to see. I'm excited for it as well. A lot of dreams cut short here, Blank, but the race for first place is still very much up for grabs. Twisted Minds were in the lead, but with a chicken dinner, Zeus could have jumped up quite far. Zeus जीत रही momentum. Let's see क्या होता है. Guys, if you are new to the stream, make sure to either like and subscribe to the channel. Last match बचा है, करते हैं इसको enjoy. PMG स्पेशल इवेंट इंडिया को भी मिल सकता है चांसेस, बट IHC का पता नहीं. सैंग भाई IHC मोस्टली यार IHC का है सीन, पता नहीं, बाकी पता नहीं. Not a bad game, not a crazy game, but one which will place them higher in the rankings. Top 5 PMGC 17 points 6. Really, really important time to be able to put up a performance like that. It is so down to the wire across this lobby. They started this game, I think, on 126. No, they were in the 130s somewhere, I think. So it is going to be really close for them to jump on up towards the top of the tables. As we take a look at our match, यार rankings, इसमें they've got 17 request points. They started on desktop site कैसे आता था? 134, which means that they will be up on 151, if I'm not mistaken. And that is breathing down the neck of Team Spirit and Twisted Minds. Yeah, they're neck and neck now. And so we have three horses in this final race. Built that top spot for that chance at $55,000. And Zeus looking to finish it in style alongside with Twisted Minds. But for Team Spirit, it would be a hell of a performance to take not only the first place in PMGC points home, but also the first place in the Pmsl EMEA finals. Absolutely. You want to be going forwards as champions here. And it would be such an accolade. I think it would be a bit of a surprise for Zeus to be able to take that one down. I think it's safe to say this is a roster that before this tournament, I mean, it's basically an all-rookie roster, right? Coming through from the Turkish region. They have done so much to improve, and it is beautiful to see that sort of step up. It was Na'Vi, though, to take highest damage, highest eliminations. With 164. What about RC? They are qualified for special invite. I don't know. I don't know what he just did to the lobby, but it certainly wasn't pleasant for them. Yeah, it was pretty humiliating. I mean, I think the teams that look back on this map, they probably won't because they don't have to play it again here in PMSC EMEA. They will be upset that they did not take that position, honestly. But yeah, absolutely insane stuff from a lot of our teams here in the penultimate match of the day. But we'll be back with the final match of PMSL coming at you over the Wrangle, who will take home $55,000 and who will be confirmed to PMGC.
Only you can find out if you wait just after this break.
हेलो गाइज, आई थिंक मुझे आना चाहिए थोड़ा सा। मैं अभी आ चुका हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक अभी जितनी भी चीज़ें चल रही है सारी के सारे र्यूमर्स है एंड चीज़ें मतलब समझ रहे हो कि जो जिसको लग रहा है वो अपने थॉट्स बता रहा है और वो एक तरीके से र्यूमर्स में भी कन्वर्ट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आई थिंक यू शुड वेट अराउंड 20, किसी ने बोला भी वेट कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा एंड IHC को मिल सकता है। हमारा अपना एक इन्विटेशनल इवेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं है, बाकी सबके अपने थॉट्स है। सैंग भाई का अपना थॉट इन्होंने बता दिया। इंडिया में लैन के बारे में पूछ रहे हो तो BGIS का आपका 2023 द स्टेज एंड द एनवायरनमेंट, द वाइब, ऑडियंस वाली बहुत ज़्यादा बेस्ट, अभी तक की बेस्ट ऑडियंस वाइब, वन ऑफ द वहाँ का था। नो डाउट BMPS का भी था, बट स्टेज इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, दैट वाज द बेस्ट। एंड यस, द आउटरो पार्ट जो विनिंग मोमेंट था वो तो भाई अनमैचेबल है भाई, वो मैंने कहीं नहीं देखा, वो मैंने इवन ग्लोबल पे भी नहीं देखा। दैट वाज द बेस्ट फीलिंग एंड द बेस्ट वाइब। जो बंदा उस स्टेज के बीच में खड़ा हो एंड वो क्या होती है, पटाखे फट रहे हो और बीच में से वो आ रही हो, मतलब वो क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है वो, तो वो उसी बंदे को एंजॉय कर सकता है। बेस्ट था। हाँ हाँ, ओवरऑल मेरे को मैं दोनों को कंबाइन करूँगा, दो इवेंट्स को, स्टेज एंड वेन्यू बोल लो या स्टेज बोल लो, अकॉर्डिंग टू द जो वाइब था वहाँ पे सेट हुआ था, दैट वाज ग्रेट ब्रो। एंड BMPS का वो वाला पार्ट तो भाई वो पार्ट बेस्ट पार्ट था मतलब अभी तक का मेरे उसमें भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे क्या, मैं तो बतक हूँ। मैं बात काट रहा है, मेरी बात काट रहा है, आपकी बात क्यों काटूंगा यार सैंग भाई? आई होप अगर इनविटेशनल हो तो टॉप 4 BGIS और टॉप 4 BMPS डेली टीम्स को इसी बहाने सोलो इन्वाइट मिल जाएगा। देखते ब्रो क्या सीन होता है। और मैं तो पेंगुइन हूँ मेरे को पता कि कोई पेंगुइन है। अहमदाबाद, यस, हिटमैन भाई, सारी ऐसे टीम। बाय द वे गाइस, 176 लोग देख रहे हो, मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब। कितने लाइक सब्सक्राइब हो गए इतने? कहाँ से देखते हैं यार? यहाँ से होती लाइव स्ट्रीमिंग। गाइस हमारे 1200 लाइक हो गए यार, डिडंट एक्सपेक्टेड यार। जल्दी से उसको 2000 करा दो, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड कर दो यार उसको भी प्लीज। चलो, अरे थैंक यू सो मच आस्क आयुष भाई फॉर द 40 रुपीज सुपर चैट। GT के टूर्नी में प्ले सीरीज, अरे ऑब्वियसली ब्रो, क्यों नहीं खेलेंगे यार। GT का वैसे भी क्वालिफिकेशन राउंड में आई गेस 4 क्वालिफायर्स मैचेस है, उसमें आपको टॉप 48 आना है, पता नहीं क्या उनका एक वो है फॉर्मेट है, 4 मैचेस में अच्छे पॉइंट्स लेने हैं। PUBG जाए भी मैं जा रहा हो खेलने। We've been at it for a month now, and we are finally drawing to Honor the King, end. okay One bro. more chance for our teams इंग्लिश to कास्टिंग claim that बेस्ट top है spot, ये and दोनों it बंदे is भाई, very तगड़े कास्टर्स है दोनों, closely बहुत ज़्यादा। It is indeed. We have teams right at the top. और मतलब हर एक कास्टिंग में इंग्लिश में इनको ही बुलाया जाता है। Margin, all looking to take on one another here in this final. देखिए भाई, मुंबई वाला भी of मस्त the था, day. बस We have a स्टेज lot of बनने के लिए interesting play जगह paths नहीं coming थी through. पूरा Nomi राउंड। भाई currently वहाँ की cleaning the वाइब स्टेज glasses अच्छा 'cause था he's यार, वो gonna भी बढ़िया need था। to get his sights गाइस on ओल्ड towards some of these other HVVP spots in वाइज, the लेट्स गो lobby. मैटे We're about to unleash कित्सुने। the beast with Monster Energy at इस बार हल्के में www.monsterenergy.com/gaming, where मत you can लेना। find नहीं out नहीं भाई, more हल्के में about the नहीं drink लेते that's यार, been कौन बोल रहा है powering हल्के में all लेते of हैं? these teams and us here at home to make it through. Fist bumps all round for the final game of the day. One last ओके time. ओके, Let's get that coordination going. I hope that's not चलो indicative गाइस of ठीक है। what I सैंग भाई think लास्ट मैच देख रहे हैं तो साथ में in देख the सकते game. हैं। It looked pretty यस clean. आई एम Went a गोइंग bit awry, but they locked ऑल it इन in फॉर at दिस the मैच। end, and that लास्ट is what मैच you कोई need एक to see. जीतेगा, देखते हैं कौन EMA का S2G. चैंपियन बनता है। हमको तो I चैंपियन mean, देखना है। do keep your spirits up, even though चलो, S2G कौन ट्रॉफी frankly उठाता है PMSL की? underperformed and have भाई not रात के been 2 able बज to गए यार, make रात it के 2 बजे कोई towards the ट्रॉफी top. उठाएगा भाई? He's still hyped to be here, and that's what you like to see. That's what you want, really.
keep that energy all the way through till the end. As we will be looking towards some of एनजिक्स these वाले teams प्लेयर going लाना home. और कूप्स Fireflux वगैरह low ट्विस्टेड down माइंड on होने the के लिए side विन विन of the lobby. रहा है One यस last chance at a अमेरिका में massive तो game. A7 जीत रही है They चलो looked भरो great in week 1. लेट्स गो But that has slowly faded away. And guess what? It's a fresh shaven Matic going into the final day. Got rid of that mustache. क्या हो गया रीमैच हो गया क्या अय्यूब भाई कैसे हो सोल डस्ट भाई एकदम बढ़िया यार आप कैसे हो अरे ट्रॉफी यार क्या ट्रॉफी है बे पीएमएसएल की वाओ Right now they're in second place behind Twisted Minds. चलो हो गया मैच स्टार्ट अरे मैच स्टार्ट हो गया बंदे तो मस्त जीते हुए थे भाई For the full season, it will be from Stalber down to Sosnovka. अरे भाई ये मुझे down the middle. लेजेंड लीग का वो दिख रहा है वॉरियर सुनील के उसमें कैसे हो दोस्त बढ़िया यार मेरे को क्लैश ऑफ क्लैंस याद आ गया भाई द ओजी गेम That is the target for Team Spirit on 156, for Zeus on 151, and for Nick the Galaxy 141, 139. It's starting to get a little bit too difficult there. Brute Force, they may be able to do it, but it's going to have to be a miracle. Beyond that, I don't think so. Down towards that 8th place, that is where the bubble will be right now. As Na'Vi on 125 sit as guardian to the final Pmgc qualification spot. Fireflux needing essentially something like 27, 26 point game, and for the teams above them to move not at all for just a chance. For just a chance. So I think for Fireflux it might just be the end of the road here for them. Open the car door and take a seat. They'll be going no further. Aaron with 33 knockouts, Effect close behind and Reed Still playing Clash of Clans. Nice यार धीरज भाई आपके इसके लिए पैसा लगता है बहुत ज़्यादा Absolutely. Plain path down the middle, circle fairly central too. Okay, and it's a clash in a hot drop between Power and S2G. Nice one. Change it around. Power over towards Yasnaya will. यार पावर को जब भी मैं देखता हूँ उसके क्लैश क्यों होता है पहले नोवा से गटका में लेते थे यासनाया में S2G से नाइस वन यार ओल्ड मेमोरीज ताजा कर दी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट मैच है यार 3 टीम्स के लिए जिसका नाम है माइंड्स TS and Team Zeus. Zeus, Talbot, Kamishki, nice one. To battle it out for that top spot along that line that sits from Milton through to Pachinki. Zeus the आज ही क्लैश लिया पावर ने मे बी S2G की रैंकिंग क्या है और इसकी पावर की पावर S2G सेम ही पॉइंट है मे बी कुछ होगा सीन इनका छोड़ो अपने को क्या गॉड बिल्डिंग पे ले रखी है पार चलो ठीक है लूट कर लेगी TS जीतेगी TS जीतेगी ट्विस्टेड माइंड के पास अभी है लीड है 10 पॉइंट का लीड बहुत होता है इस पॉइंट्स टेबल पे Zeus 151 141 NGX पूरा ट्राई हार्ड तो करने वाली है इस मैच पे चलो लेट्स सी अच्छा ही होगा डॉक अच्छा ही होगा टेंशन ना लो जो भी होगा बढ़िया होगा निकल गया S2G बढ़िया भाई रात के 2 बजे मैं फर्स्ट टाइम वॉच पार्टी कर रहा हूँ ऐसे रात के टाइम पे भाई लॉल इसका भी एकदम से प्लान बना वॉच पार्टी करने का the best been plucked from everywhere for all of our PMPLs from last year and consolidated into 16 phenomenal teams. Even 7. It has been last day bro, last day. Pmsl EMEA का यूरोप अफ्रीका अच्छा प्रेडिक्शंस हिरेन पटेल की है व्यूज एनजी एंड ट्विस्टेड माइंड्स ओके कुलियस
आप कब जा रहे हो बूट कैंप? ब्रो मैं बूट कैंप जा रहा हूँ आज. Down towards Trovo 2030. They have had that spotlight at some point or other. Even though Trovo 2030, I mean, granted, this. तुम वॉच पार्टी कर रहे हो तो देख भी रहा इस टाइम तक, नहीं तो 2 मैच स्किप कर लेता. अरे अजहर भाई थैंक यू सो मच यार, प्यार है आपका. For next season, even they have had some great moments over the course of this last month. गाइस देख रहे हो हमारी ऊंची जनता, ये है प्यार हमारे लिए. ये हमारे अजहर भाई अभी से नहीं देख रहे हमारे साथ, ये हमारे साथ 2-3 साल हो गए ना अजहर भाई आपको. The replay from S2G as they flip the car a little bit, but get it straight back on the road again. And it is that first circle shift starting to come on through. 3 minutes from now. I guess 6 slots from Pmsl, the first if I'm not wrong. Circles to finish off this finals. Watch parties are fun. If it goes that far, and if history's anything to learn from them, certainly will be. A lot of our games going the full distance here. Yes, bro. Yes. Twisted Minds. They want this game to end as soon as possible. 3 year plus शुरू से ही हूँ. Yes, top 6. Yes, bro. Top 6 will go to the GC. आज qualification round आपको मिल जाएगा. It will be interesting to watch team Twisted Mind, TS and Zeus किस approach पे खेलती है. बस approach देखो teams का खेलने का. Moving through the landscape. Five looks that team with the massive outside chance. And they need to get stuck into it nice and early. Trovo 2030, a fight on the hilltops. Battle for the bottom of the tables right now. Trovo 2030 can win this. They could launch themselves over the Falcons. Currently 11 points behind them. 16th place to 15th place. $500 pay jump. You'll look for it, but doesn't look like it's going to be super successful there. Hope gets first blood in our final match and in this final scrap over the top of Everest. Nobody else is nearby this fight. This is a full-on 4v4 all-out brawl for the bottom. And Falcons, there is an answer that's being given back to them, saying, no, thank you. You can have Marcelo, but the rest of us, over his dead body. Falcons, lose Spark. That's about it. And Trovo 2030 and Falcons looking to go out in a blaze of glory at the top of Everest. A true brawl between these squads. In the meantime, most of our teams are vying for those final placements in the center of the circle, glaring at one another, eyeing each other up, and puffing out the chest. Ragnar around the side will get caught as Ragnarok was ready for it. Trovo 2030, 3 players. Falcons had 3, but they're now down to 2. Salem trying to push around the edge. Hope there over the top, but Salem goes down first. Spark will be low HP, and it's Trovo 2030 to be able to win out the battle for Everest. And maybe it's their last match, and maybe they're on the bottom of the tables. But there's still some life in them. There's still that spark. One last shot at it, and they make it work. Virtus Pro heading on in after having one hell of a resurgence today. A much needed one at that too. IDVNRX down towards the south side. Will have qualified through those Pmgc points. It's RCB, who really don't have too much more heavy lifting to do, but would just like to see themselves safe here. This is an interesting circle shift. It goes down south. Na'Vi gonna have to push up the hills to the southwest of Pmgc, a major feature here. You've got a lot of fielded area on the western side as well. Heroic. This is all the way out on the east side. Zeus as well. Zeus trying to pick up some points here if they can get a convincing fight. And a drop down, that would be great. Volt is out. That is the off angle for Heroic, and it's a really good early pickup onto this engagement. Kevin on the ground floor hasn't got a response just yet. Rita on the top floor as Volt gets flushed.
Heroic down to 3 now. And an 8 down the stairs, a nice bouncer as Jafar on the far building. Darkin repositioning, keeping each other safe. Zeus trying to piece this fight together. Nice and methodical. A drop down and Walsh goes. Jafar still off in the far building. Watches this player get up the stairs and knows that the last player is hello on guys, up there sorry. too. Now regroup comes on in. Is there a third भैया party? युगी Not भाई really, कहाँ गए? unless brute युगी भाई force यार, want युगी to भाई के घर वाले poke आ in गए थे. from this south side, and maybe they do. रात के 2 बज रहे भाई. And this could be a way to try and turn this one Very around, very but a struggle lot bro. more damage. क्या चल रहा है Falls फाइट on पे? in as Rita gets that burn down. Kevin trapped in the corner. Jafar in the far building. And Brute Force are encircling now, Blank. The Sharks are here. युगी भाई वॉइस नहीं आ रही है. आ रही है वॉइस? हेलो वॉइस आ रही है? हेलो Zeus is on the sidelines. Jafar takes a ton of अरे damage. ये तो काफी क्रूशियल फाइट है बे ज़्यूस के लिए. हीरोज. और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आएगा बे अभी. 1-2 नॉक गिरने दो, थर्ड पार्टी आएगी भाई. ये जोन कटेगा भाई, किसी का जोन कटेगा. नहीं बे ज़्यूस, I think Zeus is out from the race. Zeus cut down to 3 players now. Kevin panicking as he can't quite find the shot. Does get the flush कर दिया down as close Kevin in. steps out from the nade, but Brute Force fully now starting to close the jaws around this. Jafar, the last player for Heroic, and Zeus's run, despite all the effort they put in, might fall short as Brute Force gonna start to. युगी भाई ने आज फर्स्ट पीएल पार्टी की, देन ईएमए और टाइम देखो. इस टाइम एनर्जी लो हो ही जाती है सेकंड होने से. वैसे भी यस भाई अदर भाई आज मैं फुल पम्प्ड हूँ, पता है आपको. बट ज़्यूस आई वांटेड यार. ज़्यूस जीतो, तुम कमबैक मारो यार, क्लोज लेके जाओ यार. ऐसा कैसे? तुम एक और फट गया यार. लो फिनिश भी हो गया. Lovely little pick up there. There was Same a knock zone, from the play same zone. जगह fight Freeze लेना took a भारी shot पड़ा. from some direction and immediately got knocked. You can see Neos is repositioning. This is resable. Still early stages, meaning the blue zone will not be unresable. HP bro, हिमाचल. And you all know हिमाचल में लोग 10 बजे सो जाते हैं यार, 9-10 बजे. और मैं 2 बजे स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई. Over the course of these finals, the जी है भाई. डेडिकेशन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब. That's it. और कुछ नहीं चाहिए. But I fear their run here may have come to a close. They will be in with a qualification spot. And अपने 63K भी होने वाले हैं, तो हो जाएंगे. 300 सब्सक्राइबर्स बचे हैं. A wild thing on the roster. Yeah, Aaron has played a mighty fine game for guys over on Zeus. Dropped a couple of lightning bolts in his time, that is for certain. But they'll have to bring the thunder over in Pmgc. हिमाचल में कहाँ से प्लीज बोलो. HP14 ब्रो. यार सोल भाई कुछ होने तो चाहिए टस्क भाई बीच में, बाकी देखते हैं. बड़ी जल्दी नोटिस करा ट्रैक्सॉन. सॉरी रोहित भाई. Careful, stepping too close to Aaron. There is the roll up as well. They hunt them down, and Zeus will fall. Yes, I know, bro. Even gods can bleed as Zeus eliminated. Third place. Not locked in because Brute Force still on the chase. So Enigma Galaxy. Action वगैरह Falcon से खेले bro. Falcon करके Falcon Force I guess. Full name of the team. A little bit more because Zeus have got those 3 eliminations that they were able to earn from the fight. Twisted Minds on that north side, just to the eastern side of the field, sits outside of Pmgc. RCB. Now Twisted and उसके पास मौका है. टीएस के पास एक बंदे की स्क्रिप्ट थी कुछ की ज़्यूस फर्स्ट आएगी, वो स्क्रिप्ट तो कैंसिल हो गई. हार्डी एक्सचिल 2 साल पहले आईजी मतलब मॉड था. यार मैंने मॉड्स हटाए नहीं है. तुम कैसे सैंग भाई भी हट गए मॉड से, पता नहीं क्या सीन है भाई. Such an important game for both of them. Trying to take that title. Twisted Minds have the worst end of the field here. Virtus Pro, but Enigma Galaxy seem to be suffering. I think Narvalo picks these up. He at least guards them out. Yeah, they're just offering them up. NGX try hard to करने वाली है full. A little bit longer into this game. The remnants of What's up मृदुल भाई? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. इसमें से कितने टीम क्वालिफाई होंगी? 6. Shifu takes a hit. Total 10. 4 already qualified, if I am not wrong, from the Pmgc points. That's a smart move.
प्राइस पूल क्या है? प्राइस पूल पता नहीं यार, प्राइस पूल बता दो गाइस लिक्विपीडिया देख के कितना प्राइस पूल है. Into it now, Lemon there. Here's the heal go through, but Shifu's in. Flip though, the next to go in, and it will be too much for Shifu to bear. Lemon can get rezzed here, default to swing through, and Axa on the guard, sat atop the buildings there. They can stay alive. Magnum isolated to the coast. Look at where they have to go. It's up north. This is great for Twisted Minds. It is really good for Twisted Minds. They have a strong position. Brute Force they might have to worry about. And for Team Spirit, this game is only getting further and further away from them. Right now, we're about 9 points behind. Yeah, they started with that 8-point differential, but Twisted Minds getting that extra elimination so far. न्यू जोन में अगले जन्म में लग तो ऐसे रहा है ब्रो. अगले से अगला जन्म भी लग सकता है, मतलब 2-3 जन्म बाद आ ही जाएगा. फेस कैम कब से करोगे? कल से यार मोस्टली मैं फेस कैम मंगा भी लूंगा, तो अगली बार जब भी घर से भी रहेगा तो फेस कैम फॉर श्योर. इस बार के लिए माफी दे दो थोड़ी सी. Galaxy sent them up towards Pmgc, and RCB happy to tuck those points under the belt. RCB Northwest side. I think चाइना से पीएल से ब्रो आपकी 3 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है. टुडे जो टीम क्वालिफाई हुई है वो है आपकी विनर टीजेबी, टीएनबा, एनटीटी. एक टीम पीएमजीसी क्वालिफायर से आएगी. निग्मा गोइंग हार्ड ब्रो. In a rough spot, but holding their own, to be honest. Nasty nade though from Flip. A lovely pick off on the back line towards Snowix, leaves them a little bit slowed down, but they will pick up more points as time goes on. They can fold back for this res. 1 मिनट 41 सेकंड है टाइम अभी. That could be. ये पीएमएस, अरे यार तुम पीएल देख के आ रहे हो क्या? पीएल से मत कंपैरिजन करना. ये सारे पीएमएसएल एंड ऑल प्राइस पूल बहुत कम होता है यहाँ पे. प्राइस पूल पहले आई गेस 1 लाख समथिंग कुछ था, 150 के प्राइस पूल होता था डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, फिर वो कम होके 1,80,90,000 आ गया था. To solidify themselves into a qualification spot for Pmgc. Even if they go down here, Fireflux to chase, they need a miracle, and these points are draining from the lobby very fast. I think at this point, it's just not possible for them, but it was almost impossible before. क्या लगता है करना चाहिए यार? अब तो चाइनीज टीम्स को काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका है चीज़ों को लेके, एंड फॉर्मेशन पेस मैच करने के लिए रूल्स वगैरह एंड सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी सिमिलर रखी है ग्लोबल टीम्स के साथ. स्क्रिम्स वगैरह एंड ऑल सारी चीज़ें पहले भी खेलते थे, अभी भी आई गेस खेलना स्टार्ट कर देंगे. मोस्टली बेटर ही होगा, मतलब वर्जन अच्छा ही होगा टू बी ऑनेस्ट. Especially by Kitsune on his squads, which is to play a very quiet game on the final map of the day. Also guys, if you're new to the stream, yeah, make sure to hit the like and subscribe, as we are very close to 63k subscribers, I guess, so you can do it. Quiet chicken dinner with a few points. Maybe they take first place, but prime time objective is to secure second. And I like that. Brute Force. I love this. I love this for Brute Force. It's just massive split. Just the balls on this team to go for something like this. This is a big change. Okay, Twisted Minds now, transition south. Brute Force reinforce up to the north. Look at Freezer already moving. Furia as well. He's going to open the door for the rest of Brute Force to move south. They're going to stop Brute Force को देखो यार, split भाई. Expect them to take shots downhill. Leaving that compound for Twisted Minds going to be difficult, especially with RCB so reluctant to leave Pmgc if they don't have to. Shots over to Fireflux, and Team Spirit are finding these angles. Team Spirit, because more of these points onto Fireflux. A good chance for them. Brute Force ahead of them. Taking that heavy split we usually see them do. जीसी कौन जीत सकता है? एनी प्रेडिक्शन? जीसी की प्रेडिक्शंस आप लगा नहीं सकते यार, सारी चैंपियन टीम ही खेलती है. क्या पता कोई अभी आपको न्यू फेस देखने को मिल जाए. And it's so open in this end circle. Zone is moving in, but they are on such the long side of it. A beautiful blow up on the vehicle, so timely, stops the nade. Freezer trying to go in, trying to get something done, be cheeky.
But an 8 over from फटा क्यों Nomi. नहीं है फ्लक्स? Not quite connected. Or grenade. Flux just on the inside. TS He's chicken. waiting for the peak. There is still that Too third party early to potential. say. A nade and Nomi dodges the damage. Lux still with the challenge. Steps up but immediately put back in his place as all the whole of Team Spirit पागल छागल हो गया यार एक बंदा वो कर लो ना क्यों खानी है यहाँ पे वो मतलब ये थोड़ा पागल छागल गलत बोल दिया बट स्टन भी था स्टन उसके पुश कर दो एक बंदे पे स्टन देखा था मैंने या मॉली होती मॉली कर दो वो ऐसी पैनिक में आ जाएगा निकलने के लिए एक ही रास्ता होगा उसके पास I mean, for brute force, honestly, as two players, they didn't want to take that smoke, right? That was not what they wanted. They have a better chance over towards that northern side. They've got more info there for the players down towards the south. अब लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं there will be a close one. Twisted के पास already lead है 4 पॉइंट ये ले गई है 65 सिर्फ 5 पॉइंट का गैप है अभी जो चिकन लेगा वो जीत जाएगा बे काफी क्लोज है आज लास्ट डे है बाय द वे लास्ट मैच है मिल जाएगा आपको विनर थोड़ी देर में They are now 7 behind with the 3 that they've been able to earn. Placements are kicking in. Brute force PS के लिए बेटी रहेगी बाकी देखते हैं. IWNRX will push them to the limit. And Na'Vi beyond them. Right now, RCB getting one player shredded away from them by brute force does make this push a little bit easier for Twisted Minds. As those placement points start to kick in, life gets harder and harder for Team Spirit to catch up. Right now, technically on elimination points alone, they would be 5 points behind. 2 महीने से हम 1v3 1v4 हो रहे हैं भाई टाइम लो यार मैं इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही दिया जब हम क्लचेस देख रहे थे that's what they were looking for, a turnaround, able to catch the IWNRX squad lacking, and now they're up to 9 eliminations. लास्ट बंदे को थोड़ा तरीके से मारो They're making their bid for freedom. मतलब एक बंदे पे इतना फ्री मत हो जाओ कि हाँ एक ही बंदा है वो फ्री होना भारी पड़ जाता है लास्ट बंदे पे ज्यादा सीरियस रहो एंड यू कैन मतलब आपके पास अगर कोई ऑप्शन है वो फंसा पड़ा है तो यू कैन यूज यूटिलिटीज जैसे यहाँ पे अभी बंदा फंसा पड़ा था तो वहाँ पे एक मॉली भी फेंकी जा सकती थी वो पैनिक होके कुछ नहीं कर सकता था एक जगह से बाहर आता वहाँ पे किसी का एडीएस होता उसको मार देते वहाँ पे वो नॉक नहीं आता जैसे टीएस का नॉक आया तो वैसी छोटी छोटी चीज होती है मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट कई बार कॉस्ट कर जाती है समझ लो जोन आ रहा है आपने नॉक ले लिया अभी एग्जांपल्स भी दे रहा था पीएल में तो आपको पुश करना है आप नॉक खा गए डैमेज ले गए बहुत सारी चीज होती है तो ये छोटी छोटी चीजें करती है आपका एक नॉक आ गया आपका दूसरा बंदा घुस गया अंधी में वो भी नॉक खा गया तीसरा घुस गया वो भी नॉक खा गया ऐसे ही होता है चीजें अभी पीएल में हमने एक क्लच देखा था एसटी के बंदे ने मारा था वो थोड़ा सिंक वाइज और अच्छा हो सकता था एक ही बंदा था उसने एक बंदे को मार के रिफ्लेक्सेस में दूसरे बंदे को मार दिया दूसरा बंदा उस टाइम पे अगर थोड़ा सा एक्टिव होता शायद उसको ले भी लेता तो these are the examples तो बस यही है एक भाई बोलो ना पहले जैसे प्रेडिक्शन करने क्या आप लोग करोगे प्रेडिक्शन बताओ गाइस किसका चिकन आएगा यार ऑडियंस बोल रही है यार पूछने को बनता है यार ऑडियंस गाइस स्पैम कर दो जल्दी से कौन जीतने वाला है ये वाला EMEA चैंपियनशिप ट्विस्टेड माइंड और टीएस जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे ऐसा लग रहा है टीएस जीतने वाली है भाई बाकी पता नहीं लो भाई गई ट्विस्टेड माइंड्स Team Spirit are 4 players strong up into top 4. Lord will fall next. And third place looks all but guaranteed as RCB are going to struggle to move. Obe? RCB? Wild? वाइल्ड ने वाइल्ड दे दिया भाई NGX विनर लेट्स गो NGX विच टीम यू आर सपोर्टिंग गाइस जल्दी कमेंट करो यार एनर्जी दिखनी चाहिए रात के भाई 2 बजे 500 लोग देख रहे हैं मेरे को आज दिल से इतनी खुशी हो रही है टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया एंड इफ यू न्यू टू द स्ट्रीम गाइस मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यार And I guess Twisted Mind ने कर दिया भाई काम अपना Trying to find any res that they can. Neos does get sprayed, but
They'll be okay. They DF should ने हक look दिया, for this Twisted res. They Mind ने should be कर able to दिया. find it. NGX Oh, 13 maybe किल not. भाई. They go beyond. They do not step up for that res, and instead भाई. they're going to leave him. They're going to leave him behind. Play for the NGX backline. 'Cause there are फर्स्ट या 2 players सेकंड down. भाई. They just NGX want ने to क्या secure कर at दिया least ये? one. Neos hasn't been run down just yet. पूरा They know एज where he क्लियर is. करके जिनकी Get the हिल की reload on. साइड I'm से sure he's सारी not long for टीम this को one. कितनी टीम मार दी भाई इन्होंने. वीपी से फाइट ली थी, फिर नावी पे ली थी वहां पे. पूरा एज क्लियर करके शुगर से आ रहे भाई बंदे. टीएस के पीछे लगाई गाड़ी इन्होंने. पकड़ी शॉटगन. Pmgc really looking to confirm their position. They Knock- have got the side of the नॉक circle नहीं खाना on shift. बाबे. नॉक Snowix has to hit the खाओगे. deck though. A lot of damage sent out. Nomi with the challenge. He wins out the duel. Able to put the DPS to kill. work as well to get the कितना होगा? flush. Twisted And Mind now की already lead थी. Pmgc are split down to 3. Kill नहीं One देने player ना. off in the distance. Team Spirit टीएस with को no किल cover नहीं to देने work with. भाई. But they transition out to the east side. Brute Force were allowed to get back up to 2, but Effect spots Furia. Looks for अरे the इफेक्ट flush, और and किल दी थी. more आई गेस points find टीएस their निकाल way गई. into the टीएस निकाल pocket. गई. Team Spirit टीएस और एनजीएक्स want आई this गेस सेकंड title. आ जाएगी मोस्टली अगर 55K हैशटैग 2 and पे a आती है. trophy to lift. It's been a long time coming for Team किल Spirit निकाल to दिए. find किल निकाल. themselves काम कर गई वे. firm 164 in these type of tournaments, and it's been looking good all the 164 way प्लस through. 6 163 कितने to हो गए? 168. 170 Second पॉइंट. place एनजीएक्स के at कितने this पॉइंट? point थोड़ा in पीछे time करके देखो. would confirm for Team Spirit. करंटली Just pre-pod remaining for Brute Force. 170 This guy पॉइंट है. goes अगर down मैं and that's सॉरी it. Team Spirit will टीएस be के कितने किल lifting है? the trophy at the end of this. They'd like to finish it in a blaze of glory with the chicken dinner. Fresh out the oven. 171 पॉइंट है. 171. एनजीएक्स के कितने पॉइंट थे इससे पहले? वो ऐड ऑन कर दो ना 13 किल्स. But I don't think you can deny them. 155. नहीं एनजीएक्स के पहले कितने पॉइंट थे इस मैच से पहले? टीएक्स निकाल गए. मेरे को भी ऐसे लग रहा है टीएस निकाल गई. Little bit more to go. ब्रूट का एक और किल आने वाला है टीएस पे. Will hold off the लो आ first गया. push, but they spot him. Force him खत्म. back behind the tree. The rest of the squad is on the roll up, and that is enough. और Team 15 किल Spirit, तो ये भी निकाल गई यार. they've put down the hurt. A nade from Ralph. Can they 141 close it out 15. with a chicken dinner? Nick 156. Pmgc नहीं यार मुश्किल है. this क्या बात match. कर रहे हो यार. We'll have to see where they end up landing on the table. मुश्किल है. because मुश्किल है they भाई. actually weren't too far क्योंकि हैशटैग 2 तो टीएस भी at the लेगी. अगर start of this टीएस match. अर्ली Blank, एलिमिनेट हो this जाती तो could एनजीएक्स get निकाल देती भाई. dangerous. वो बड़ा Team मूवमेंट बन Spirit, जाता. Sure, they might have बट done यार it. एनटीआर फाइटिंग For स्पिरिट now, फॉर But what can Nick एनजीएक्स Pmgc बनता do? है भाई. Yeah, Nick Pmgc take themselves third place right 15 now. 10 25. I don't think they'll drop 6 much पॉइंट तो higher उनको than भी that, मिलेगा. but third place knocking Zeus down is so 171 प्लस unfortunate. 178. I mean, they could 25. 15 eliminations. मुश्किल है I think यार. they could do it. There's a 4-point placement difference. If they get the 3 eliminations, चार that's पाँच wait, 4 छः eliminations. That's 8 points. अभी टीएस That's ऑलरेडी 8 points. They could do 171 पे this. खेल रही है. अगर वो हैशटैग So they सेकंड could भी move आती है और up. They किल भी could लेके overtake जाती है Team Spirit. तो ज्यादा ही रहेंगे. आई गेस टीएस They could do चिकन भी maybe. निकालेगा अभी. हाँ मतलब टीएस का हो गया काम यार. ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट If Team टीएस Spirit सेकंड take one, एनजीएक्स if Team Spirit थर्ड take one of these ट्विस्टेड माइंड्स. यही eliminations, हुआ. if ज्यूस ने Team चोक Spirit कर take दिया one of बे. these eliminations, ज्यूस का क्या get 1 मोमेंटम point बना on the था. board. They had 2 chicken dinners. A tiebreaker goes the way of whoever wins this. They're both on 2 chicken dinners. एनटीआर नाइस प्लेट. नाइस प्लेट. Blank, this could happen if Nick Galaxy दुख take it यही होता है away इतना क्लोज right at आके the हारना. closing moments. आज हमने 2 टीमें देख ली. एलजीडी वो तो मेरे को समझ नहीं आया इंटेंट दिखानी. बट एनजीएक्स ने मेहनत डाली भाई. With Team Spirit 163. वो ना पता है टीजेबी से बड़ा जीतना क्या हो जाता. एलजीडी का जीतना कि कहाँ से आगे पता ही नहीं लगा. आज अगर वो लास्ट मैच में इंटेंट दिखा Team Spirit देते have हैं. 1 elimination of leeway. If they get 2 eliminations, they win. If they don't, एनजीएक्स थर्ड है. ओके. we've got a new champion. नॉट फॉर्मेट. 2 किट्सुने और आई गेस मैटिक और बाकी जीजी में थे. टिक्जी वगैरह वो वहीं पे रहे थे. बाकी डिसबैंड हो गया था रोस्टर. बाकी आई डोंट नो. बाकी किसी को पता है तो बता देना. इस बार कौन सा रीजन अच्छा कंपटीशन दे सकता है? सेंट्रल साउथ एशिया. पीएसए इज प्लेइंग टू गुड. To put in the final shift of their tournament. A nail biter. And a nade over to Team Spirit. They are more central on Team Spirit's position right now. And the smoke train breaching out. Kitsune wants the टिक्जी ने offlane. शायद छोड़ दिया. इस्पोर्ट्स छोड़ दिया क्या Leveraging their टिक्जी ने? numbers. ये नेड On Snowix, and that's 1 down from Good Team nade. Spirit.
भाई लग रहा था नहीं फटता तो भाई नहीं फटना था भाई, दो नॉक आगे थे टीएस के, गलत फट गया वो बंदा। मजा आ रहा है देखने में। Behind the truck with Snowick Anti right to his anti. flank. Can he hold on? Can he find Effect with the blue zone pushing in? Now or never, Enigma Galaxy. Effect rolling on down the hill. Ooh. Team Spirit trying to defend their title. Effect goes Anti down. bhai, And anti, Team anti, Spirit anti, make anti, it. The NGX chicken anti dinner. bhai. They will top the Well tables. played. There was an ascension attempt there by Enigma Galaxy, but they could not make it. They are the champions. Finally, Twisted Minds. A title, a trophy, a championship for Team Spirit. Unreal stuff. It has been crazy throughout. भाई साहब मैटिक भाई बंदा है वे मैटिक। मैटिक एंड कित्सुने भाई बंदे तो है दोनों भाई। Incredible stuff from Team Spirit. It's been a long time coming. Guys 600 लोग रात के 2 बजे देख रहे guys. If you are new to the stream, make sure to hit the like and subscribe to the channel. And here we go, our second champions EMEA के, वो है Team Twisted Minds. बहुत ही अच्छा रोस्टर बनाया भाई, बहुत ही रोस्टर इफेक्ट। And now Team Spirit 2024 मैटिक कित्सुने भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट अ जर्नी भाई। आज हमने गाइस जिन लोगों को नहीं पता, हम 2 बजे तक वॉच पार्टी कर रहे हैं। आज हमने पीएलपी स्ट्रीम करा 5 घंटे एंड ये भी ऑलमोस्ट 3 घंटे स्ट्रीम हो चुका है। तो हमने ऑलमोस्ट 8-9 घंटे स्ट्रीम करा आज के दिन पे। अगर आपको ये हार्ड वर्क डेडिकेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। बाकी थोड़ी सेरेमनी आएगी इंग्लिश में। ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين والمتابعين وتم تتويج تيم سبيريت ابطال موسم الخريف لعام 2024. Calm down, Nomi, it's yours. Ulnavi, yes. अमेरिका वॉच पार्टी भी कर लो भाई। लाइक भाई बस बात करो। एक भाई ब्राजील का भी कर लो भाई, बस करो भाई, बहुत हो जाएगा भाई। ब्राजील का भी कर लिया तो काम हो गया। First of all, how does it feel? You finally managed to get yourself this regional title. Tell me how you're feeling right now. It feels great, you know, because basically we just wanted to get the trophy. It means a lot for us to win at the LAN with the new roster. That means a lot to me, to my organization. So this feels great, you know. This last fight, Jesus. Honestly, you had everyone on the edge of their seats. You should have seen everyone backstage. Everyone's watching. People are doing calculations like, did Twisted do enough? If Nigma win the fight, do they get the title? You know, by the way, I think if my calculations were right, if you guys just मैं बस इंटरव्यू सुन रहा था। अरे यस यस गुड नाइट अजहर भाई। यार कल मंडे भी है, जाओ जाओ तुम जाओ यार, सो जाओ, कल अर्ली जाना भी होगा। बहुत दिन भाई टाइम स्पेंड करने को मिला आपके साथ। थैंक यू सो मच है, थैंक यू सो मच फॉर द लॉट ऑफ प्यार। तो गाइज आई थिंक यू आर वाचिंग मैप स्ट्रीम। नहीं ब्रो अभी नहीं देखा, मैप स्ट्रीम मेरे पास नहीं था। मेंबरशिप लूंगा अभी। अरे अरे छोड़ो यार मामा भाई, नो वरीज, आप आओ, आपका नाम हमने पढ़ लिया, आगे के लिए भी ठीक है। टिक्सी जीजी से खेल रहा था ना, जीजी डिसबैंड हो गई गाइस। You want them to answer? Yeah, I mean, whoever was like the last 2 players. Yeah, go for it, please. Fine. So basically, we just knew that if I could make an angle, we could just see all the Enigma, get all the info. It didn't matter, honestly, if I knock or not. I will just give them all the info. So I got there, I got knocked, but I could tell my teammates, like, one behind the drop, one behind the car, and we basically won the fight at this moment because they had all the info, they had nades, and this was pretty easy. Nice one, nice one, great one. The nade that you guys got on SnowX right behind the drop, that definitely opened up the fight for you guys. Yes, वही drop वाला बहुत प्यारा नॉक आ गया। I want to give the floor basically like to the entire team. Is there anyone that any of you? अरे अरे हो रहा भाई, big people on the chat आएगी भाई। हो रहा मैं कोचिंग के लिए आओ। अरे 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 हो रहा भाई, what's up? Yeah, please. Big people on chat. Because I'm seeing you're very emotional right now with your. क्या हो रहा है रात के 2 बजे यार? He got a regional title, so it's only fair. So the floor is yours. Okay, я хочу сказать спасибо всем болельщикам в первую очередь, всем, кто поддерживает своей команде, родителям, близким, лично мою команду. Я очень счастлив сегодняшний день. हो रहा भाई ओपी कर दो गाइस, चैट के अंदर हो रहा भाई ओपी इन द चैट कर दो। Yeah, please. So he said, thanks to my family, thanks to all the people who supported us, our club, our team. He said that it's really important title for him, and he said that this day is a history at this point for him, and it means really a lot. And thanks to the club, he said. Of course. Okay.
इस बार जीसी में होरा मारेगा। अरे होरा या डीआरएस, बस देख लेना डीआरएस होरा को ना मार दे या होरा डीआरएस को ना मार दे, तो आप दोनों का अलग ही कंपटीशन चल रहा है। इमेजिन होरा मिस्टर मतलब होरा एंड सैंग भाई इन द सेम जगह पे, अलग भाई अलग। Также у моего папы через 2 дня будет день рождения. Вот папа, поэтому поздравляю тебя с днем рождения. Это будет... ठीक है गाइस, आई थिंक इट्स इनफ टाइम यार, बहुत ज्यादा स्ट्रीम कर लिए आज के दिन पे। तो So he said that he's really speechless at the moment, and it's hard to, you know. आज के दिन पे बहुत स्ट्रीम कर लिए गाइस, अब मैं स्ट्रीम को एंड करता हूँ। ये लोग भी जीसी गए, हाँ जीसी गए, qualified, twisted minds. He also told that thanks to all the nation that supported him a lot. It means a lot for him. And पॉइंट्स टेबल देख के जाओ, पॉइंट्स टेबल चल ठीक है, पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं एक बार। गुड नाइट भाई, गुड नाइट गुड नाइट। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। It's easy. Okay, I don't think we need translations for that. لكن ملخص المقابله خلينا نقول مبسوطين كثير اكيد، يعني فخورين بحالهم انهم قدروا يوصلوا بهاي المرحله وقدروا ياخذوا لقب البطوله. يعني بشكروا كل متابعينهم، مشجعينهم، منظمتهم، عائلتهم، اصدقائهم. ठीक है दिखाओ पॉइंट्स टेबल, दिखा रहा हूं पॉइंट्स टेबल दिखा रहा हूं بهاي اللحظه. Okay, اعزائي المشاهدين, ladies and gentlemen, one more time, your PMSL Emea Fall Champions, Team Spirit. Congratulations Team Spirit. Hey, it's easy for them apparently, according to Congratulations. Matic, you know. और सबके अलग-अलग Sweating डेस्क, a little bit, not even a jot. As we हमारे यहाँ take a look cabins होते हैं down वैसे a डेस्क। hallway of champions, but there can be only one team to lift the trophy. I enjoy the fact that we finally got the pom-poms on heads at the end of it. To be honest with you, I was waiting. पॉइंट्स टेबल दिखा दो यार। #2 पे कौन होगा? निग्मा आ गई होगी। निग्मा 6 + 15 21 161। हाँ यार निग्मा आ गई होगी यार। Pleased to finally see them at top. I think it's okay to be a Spirit fan because they have been ट्विस्टेड ने कितने पॉइंट निकाले थे? for quite a while now. But we've had a fantastic mashup of new rosters. TS निग्मा ट्विस्टेड, ये रहा होगा सीन अभी। Twisted Minds have been so fun to watch, and they just यस एग्जैक्टली यार। स्पिरिट भाई ट्विस्टेड माइंड्स यार, निग्मा का तो बहुत गैप था स्पिरिट से। अगर 4 पॉइंट ऐड ऑन भी कर लो, अगर वो 3 किल भी निकाल लेते, 4 3 7 7 9 169 पॉइंट होते फिर भी। अरे निग्मा थर्ड है, निग्मा सेकंड आ सकती थी ये सीडी निकाल के। Zeus, a big surprise this season, Blank. Zeus coming in from the Turkish region, able to put up 154 points here in the finals. That is a marvelous performance, beating out previous season champions Brute Force. They have got a lot ड्रॉ टाइप नहीं हो जाता in their future, I'm sure. Absolutely. We look down towards our second page here. The cutoff is 10th place with IWNRX and Virtus Pro. निग्मा थर्ड मोस्टली भाई, यस थर्ड है भाई। Sadly for Fireflux, Power Esports, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, टेक केयर। बहुत बड़ी स्ट्रीम कर लिया यार आज, टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ी स्ट्रीम कर लिया। गाइस ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अभी के लिए मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। 20 of our squads here who joined us for Pmsl Emea, but only 10 could make it through. It has just been awesome to be here overall, very much so. I wish I was speechless. Unfortunately, I'm a bit of a yapper, so I'm not. No, I mean, to be fair, as you said, those 4 teams that left us, Black Esports, Vibes, Footballers Esports, and I'll leave the last one for a moment, that we won't be seeing them again. But Guild, hey, we're going to see them some more over in Pmgc. They got invited. Indeed. So they will still be there. Let's take a look at some of the strongest players.